हेलो वेलकम भाई, वेलकम जनता जनार्दन। हाउ इज माय ऑलमाइटी फैम भाई? इट इज अ मैच डे जहां पर हमें वापस आना ही था लाइव। लेट्स बी रियल, यस एब्सोल्युटली। बहुत दुख दर्द पीड़ा चल रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, ऑफ कोर्स ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में हम इंडियन क्रिकेट करते ही है, बट वहां तो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा चल रहा है। हैविंग सेड दैट, वनडे क्रिकेट में अच्छा नहीं चल रहा था। वील कम बैक टू इट, क्योंकि यहाँ पर बहुत दुख दर्द पीड़ा चल रहा है विद चेल्सी। बट आज किसका होगा भाई दुख दर्द पीड़ा? यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इन द हाउस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दैट मतलब जस्ट अबाउट सिटी फेवरेट्स है। मतलब जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली सिटी आर ह्यूज फेवरेट्स, बट लाइनअप्स में क्या दिख रहा है गाइस? एवरीवन बिग अप टू द ऑलमाइटी फैम। बोलिएगा कौन कौन है जुड़े हम हमारे साथ। एब्सोल्युटली, इफ यू आर जॉइनिंग फ्रॉम ट्विटर, डेफिनेटली subscribe. Doesn't take a buck, but it's a fan channel for all to see. We are here to just discuss and have a fun watch along. And yes, भाई पहले मैं बोल देता हूँ, जो भी लोग offended हो रहे हैं with the ball derby tag on the thumbnail, जब पता नहीं रहेगा after the match, तो मजाक कर रहे हैं. We don't kind of be there. Having said that, it is definitely a ball derby technically. अब which ball manager is better? Obviously Pep is better, लेकिन Manchester United fans definitely जानते हैं यार, going to the Etihad and getting a result, of course, those early days people cannot forget. Lekin it's been a while, I have to say for sure. Lekin hope can be a dangerous thing. Ritik, in terms of the lineup, jahan mujhe dikh raha hai, I'm not sure if you are able to see on my left hand side, that's your right hand side. Lekin the fact is, आपका मेन चीज है लुक शॉ इज अ लॉन्ग टर्म इंजरी. आई नो बहुत लोग बोलेंगे भाई लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं है, मगवायर नहीं है, हु सरप्राइजिंगली हैविंग अ गुड सीजन इन माय ओपिनियन कंपेयर्ड टू व्हाट ही हैड. लेकिन कोबी माइनो स्टार्ट्स इन मिडफील्ड along with McTominay and Casemiro, और ब्रूनो फर्नांडिस भी है. तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट किए थे ऑलमाइटी ब्लूज. वी डिड काइंड ऑफ सी दैट फॉर श्योर दैट हमने प्रेडिक्ट किया था दैट फर्नांडिस माइट प्ले दैट काइंड ऑफ अ रोल, और रैशफोर्ड खेल रहा है नंबर 9 बिकॉज ऑब्वियसली हॉयलैंड इज इंजर्ड विद गार्नाचो बीइंग ऑन द विंग एज वेल. लेकिन मैनचेस्टर सिटी भाई, यहाँ मार्च का महीना आ गया, तो मैनचेस्टर सिटी लुक्स लाइक इट एटलीस्ट ऑन पेपर गोइंग टू अ 3-2-4-1. क्या बोल रही जनता जनार्दन? यहाँ पर डेफिनेटली आई सी वॉकर प्लेइंग एज अ राइट सेंटर बैक विद स्टोन्स एंड डियाज बीइंग, आई थिंक स्टोन्स इज इन मिडफील्ड, एकी खेलेगा लेफ्ट सेंटर बैक, डियाज खेलेगा सेंटर बैक. स्टोन्स काइंड ऑफ वेल डिफेंडिंग, विल गो बैक व्हाइल अटैकिंग, व्हाइल विल कम टू मिडफील्ड, और जुड़ेगा रॉड्री के साथ, जो हम देखे ही थे लास्ट सीजन टुवर्ड्स द एंड, एब्सोल्युटली इन द चैंपियंस लीग स्पेशली. De Bruyne, Bernardo Silva, Foden and Doku, भाई क्या 4-man attack behind a Haaland who basically has a good game against Manchester United. Let's be real about that. लेकिन देवेश in the house, बेगा होप तो जीरो है, बस थोड़ा अच्छा खेल ले. अभिषेक इन द हाउस, भाई अपने ओजीज आर बैक एब्सोल्युटली. रोहित एज वेल. 4-4-2 लग रहा है बोल रहे देवेश. हाँ, ये भी हो सकता है अगर 4-4-2 मतलब स्क्वायर बॉक्स डायमंड, वो भी हो सकता है विद अ पॉसिबिलिटी दैट you have Mainoo or Casemiro being like the sitters, or maybe आपका Mainoo और Casemiro और Scott McTominay और Fernandes doing the pressing from the front. Absolutely, वो भी हो सकता है absolutely. लेकिन मुझे लगता है हाँ, क्योंकि 3-4-1 है, you might assume that might be happening with देवेश. लेकिन 3-4-1 जब 4 है मैन सिटी के, they are like in a line right almost. तो I don't think that's going to happen, क्योंकि you will be attacked on the wings in my opinion. और वहां पर Bruno Fernandes has to do a lot of defensive work. Man, you always turn up for big games. I agree actually cross more or less. That is what mentality जो है teams like Manchester United, Liverpool in recent years as well, and they kind of stand up in big games. If United win, I will start studying from tomorrow. Biscuit. And that's a good one. Don't underestimate the power of hope. भाई सिंपल सा बोल रहा रोहित, वेल सेड, ऑफ कोर्स ड्यू टू. लेकिन द रियलिटी इज दैट भाई फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है भाई. स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स वी हैव सीन इट भाई, क्या मतलब क्रेजीनेस हुआ इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स इन वेरियस अदर स्पोर्ट्स एज वेल. लेकिन फुटबॉल में स्पेशली ना, मैनचेस्टर डार्बी डे है भाई. हम नहीं रेड कार्ड आई एक्सपेक्टिंग. सबसे पहले ये बोलिए, मैं तो मैं चाहता हूँ अगेन एज अ न्यूट्रल, सॉरी सिटी फैंस, सॉरी यूनाइटेड फैंस, मैं चाहता हूँ मारा मारी नहीं चाहिए, इंजरी नहीं चाहिए. वी नेवर वांट इंजरीज राइट, बिकॉज इट्स अ यूसीएल वीक एज वेल बाय द वे फॉर सिटी, ऑल्दो एक लेग है इन द क्वार्टर फाइनल. बट मतलब प्रीटी श्योर दैट वी विल बी लाइकिंग थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा एंड थोड़ा बहुत रेड कार्ड्स, जस्ट अबाउट अ फ्यू हैंडफुल हो जाए भाई. Damn that midfield is elite. Yeah, they're back to the season 2022-2023. Abhishek looks like it's City, that is City with the best lineup, absolutely. लेकिन हाँ, जैसे अभिषेक बोल रहे, सब लोग लाइक करिए. मैंने शेयर किया इन द कम्युनिटी पोस्ट ऑन बोथ द चैनल्स. आई बिलीव यू कैन हिट अ लाइक देयर आल्सो, सो दैट पीपल आर रिमेंबरिंग दैट वी आल्सो डू लाइव स्ट्रीम्स.
just about, I know, couple of weeks were, लेकिन in between we released a couple of short videos which hopefully you guys have hit the bell icon for. If you have not, you have missed out some content. और अभी तो भाई शुरुआत है, क्योंकि मार्च आ गया and IPL and EPL and UCL जो एकदम प्राइम मंथ्स है ऑफ स्पोर्ट्स भाई, दिस इज इट, नेक्स्ट 2 months on both the channels. Don't forget to hit that bell icon, and we are working for something very special. 4-3-1-2 with Bruno false 9, मुझे ये देखा है तो अच्छा. तो ऋतिक बोल रहा है जैसे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं गैलेगर, इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्रंट बिहाइंड द फ्रंट टू, जिससे कल खेलते, ऑल्दो हम लोग खेले थे 3-4-1-2, आप बोल रहे हो 4-3-1-2. इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट लाइक आई सेड, मतलब आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ इट्स बेसिकली 1 versus 1 at any point in time. तो मुझे लगता है it's almost like Bruno will be an extra man who will coming from the wings, और 3 versus 2 रहेगा in midfield, proper core of midfield. तो Stones and Aki versus Casemiro, Mainoo और McTominay रहेगा, with of course Bruno helping out as well. तो Manchester United will try to kind of ज्यादा मेंबर्स लाने के लिए मिडफील्ड में, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो हालैंड के लिए मेन है, वी ऑल नो हालैंड के लिए मेन चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम केविन डे ब्रुयना. वो एक जब खेलता है तो अलग ही एलिमेंट रहता है रॉड्री का. तो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू ब्लॉक इफ यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप बोल रहे हो. लेकिन हाँ भाई, सब लोग, मैं यहाँ पर उस दिन बोला था, आई डोंट नो इफ हाउ मेनी ऑफ यू ऑल सी ऑलमाइटी ब्लूज, तो वहां पर आई थिंक आई सॉ, बट व्हाइल आई शो यू द बेंच एज वेल, एक सेकंड दीजिएगा भाई. चेल्सी फैंस विल बी लाइक यार सीरियसली कोवाचिच क्यों गया था यार. लिटरली भाई बड़े गेम में शुरू नहीं करता यार, मैं क्या ही तो बोलूं. Kovacic is again on the bench. Alvarez is on the bench, yaar. मतलब is it time that Alvarez is to move from City? Although वो लोग जीत रहे trebles and what not just about. Sergio Gomez is on the bench as left back. Oscar Bob as well. Matthias Nunes again, like Kovacic, is not getting much game time in my personal opinion. Matthias Nunes will be a Calvin Phillips part 2 in my opinion, in terms of game time. Rico Lewis, in my opinion, मतलब जरूरत नहीं थी उनको और midfielders की, और सुनने में आ रहा है they are also going for a certain player from West Ham, if you know. Josko Guardiola is back on the bench. Very important information, क्योंकि वो injured था. Manuel Akanji is on the bench as well. तो भाई इतना strong bench है मतलब of Man City. United लेकिन Eriksen है, Amrabat है. These people can definitely come on. Antony, Diallo on the wings can come on as well. तो भाई this is what we are talking. To be honest, Kamwala did quite good, I believe, in a couple of matches that he's played. लेकिन भाई सब लोग, हाँ मैं क्यों बोल रहा था Almighty Blues देखे थे कि नहीं भाई. guys, ये I don't know how many of you all see, but I'm not मैं पहले बोलता हूँ disclaimer, I'm not a United fan. I'm not a United fan. I'm a football fan. I'm an EPL fan. और सबसे पहले भाई जब इंडिया में मिलना शुरू हुआ था jerseys, right? तो let's be real, whether we like it or not, us Chelsea fans, you City fans, Arsenal, Liverpool fans, to some extent Spurs fans if any, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड. और उस समय शुरुआत हुई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली व्हाट दे वर डूइंग. एंड ये मुझे मिला था सबसे पहले बेकहेम का, ऑल्दो बेकहेम इंग्लैंड के लिए मुझे अच्छा लगता काफी. एंड दिस इज व्हाट इट इज, शार्प का जर्सी. आई डोंट नो इफ यू नो, दिस इज लाइक, आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग 2000 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99 2000, इफ आई रिमेंबर राइट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन. Manaj in the house, what's up? Haaland is injured, exactly. Laughter Club as well. 2 teams will miss Champions League among options. हाँ ये भी हो सकता है, मैंने ये मिस कर दिया. एक और चौथा ऑप्शन देना था, बिकॉज पोल में जो मैंने दिया है, आई थिंक अगर बाई चांस सिटी नहीं जीतती है चैंपियंस लीग इस टाइम, और इफ आर्सेनल बाय चांस डोंट गो टू द क्वार्टर फाइनल्स, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ओनली 4 टीम्स विल गो फ्रॉम इंग्लैंड टू द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. बट विल टॉक अबाउट इट द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज जब हम चैंपियंस लीग स्ट्रीम करेंगे. ऑलमाइटी ब्लूज, सिटी को 2 रेड कार्ड बोला देवेश. कैसेमिरो रेड कमिंग. भाई येलो तो डेफिनेटली आ रहा है. कौन से मिनट में आ रहा है कैसेमिरो का येलो कार्ड? पहला वाला, वो सबसे पहले बिगर क्वेश्चन है. अब देखते हैं व्हाट हैपेंस बियॉन्ड दैट. बट आई कैन डेफिनेटली सेंस, आज मुझे लग रहा है ना कहीं मतलब इफ सिटी विन 4 प्रीमियर लीग्स ऑन द ट्रॉट, seriously, as much as मैंने खुद बोला United is the biggest club in England even now, despite the last decade where they've not performed up to the level जो हम basically जा रहे हैं Chelsea. I think United are not going to take it easy. Again वो लोग खुश नहीं रहेंगे Liverpool win, क्योंकि वहां भी टोटल लीग टाइटल्स का काउंट अभी भी जारी है, नॉट जस्ट प्रीमियर लीग टाइटल्स. तो वहां पर भी है. तो एंड आर्सेनल, जो पीपल लाइक अस जो ग्रो हुए लुकिंग एट दैट राइवलरी, यू नो, मुझे लगता है यूनाइटेड के लिए तो भाई ऑल द 3 वर्स्ट केस सिनेरियो. लेकिन कोई नहीं, आज के लिए दे नीड द पॉइंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको चाहिए चैंपियंस लीग फुटबॉल. लाइक मैंने पोल में डाला, बिकॉज टॉटनहम जीत गई है कल रात को. विला बाय द वे गॉट अ लास्ट मिनट विनर थैंक्स टू डीनिया, 89 मिनट आई बिलीव. योर प्लेयर टू वॉच आउट. अगेन भाई 2 मिनट बाकी है, आई बिलीव भाई टाइम फ्लाइज. तो सबसे पहले प्रेडिक्शंस हो जाए, प्रेडिक्शंस फॉर द स्कोर एंड हु इज गोइंग टू बी द गोल स्कोरर्स.
And player to watch out. I think obviously it's a given. Player to watch out has to be, in my personal opinion, McTominay. सॉरी जोक कर रहा था, नहीं जोक नहीं कर रहा था, I'll be honest. सब लोग बोल रहे हैं कोबी माइनो कैसेमीरो. मैक्टोमिने कैसे करता है ना, might be the crucial thing to kind of stop De Bruyne. और मैक्टोमिने, we all know he has a goal in him. मतलब I'm just saying, people might be very surprised I just took that name and you're like seriously bro. लेकिन the gameplay क्या है? Stopping De Bruyne passing, stopping Rodri passing. अगर वो दोनों passing range नहीं मिले उनको, that is the only way that United can stop City, in my opinion, at the Etihad. As much as हमने किया था, I remember not very far back, 1-1. लेकिन I genuinely believe it is midfield versus midfield, and player to watch out is either going to be obviously De Bruyne, Rodri, or the combination of Mainoo, Casemiro, or McTominay. I will miss my Fred. Devesh बोल रहे हैं. Of course, in between we can definitely talk. अगर आपको कुछ questions तो बोलिए. Again हम शुरू करने वाले वापस से. I am talking to a couple of creators already. We are thinking of doing some podcasts और थोड़ा सा shorts और बना रहे यार. Or do it's in the works. Absolutely. Like I promised. जैसी टेस्ट सीरीज खत्म होता है, you will start seeing that. टेस्ट सीरीज में लाइव स्ट्रीम ज्यादा, I did a couple of them videos as well, but I don't think people were interested. So, but if you're interested, we are always interested. Like करो भाई सब लोग. Yes, absolutely भाई, doesn't take a buck. सब लोग like कर दीजिए, जल्दी जल्दी ठोक दीजिए like button on the stream as well as community post. Yep, the difference of the jersey was too much, but yeah भाई मैं पहले disclaimer दे दिया था देवेश. लेकिन हाँ, I did like a couple of players from United. That doesn't make me United fan. There's a difference. क्योंकि मैं English football को follow करता था, like many of you as well. 2-1 Man United, Jinx cross. Ritik, yes, I know the build-up. Ankit, I remember everyone at the Chelsea team, but they played. Bilkul, I think, and United have done that in the past. Again, there's the Derby day. You cannot say anything. City are in red hot form in United throughout the season, haven't been convincing. My prediction is 3-1 to City. चलो भाई मेरा prediction ले लीजिए. As much as I don't mind a draw, लेकिन Chelsea के लिए इतना सा चांस वो तो almost मर ही गया. But फिर भी hope is what keeps us alive. I think I want more or less a City 2-1 victory, but reality में I can see City beating United a little bit more easily. मैं बोलता हूँ high scoring रहेगा for a change, and I'm saying चलो मैं बोल रहा हूँ 4-2 भाई. I know United में goal scorers missing है, but I am calling it 4-2. I don't know why. मुझे एक weird feeling आ रही है, इधर red cards आएंगे या multiple goals आएंगे. चलो मैं red cards तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 4-2 बोल रहा हूँ. और obviously I can see Haaland getting a brace yet again, as much as it might pain all United fans. लेकिन अगर red cards मिले और draw हो तो I don't mind that. चलो भाई शुरू हो गया यहाँ पर. Come on man, मैं गाने वाला था come on Chelsea. आजकल watch along वहां जा रहा हो रहा है ना, लेकिन we have to restart the neutral watch alongs on Almighty Sports and also for UCL coming up. लेकिन यहाँ पर राहुल बोल रहे हैं, do you think we performing well against City due to Poch at Spurs played well against City? Not really. I think it's more about players motivation यार. वो लोग मतलब where you want to impress, there you impress. Cup games or big games we have done well except for the Liverpool game. अरे सिटी ऑलरेडी धावा बोल रही है भाई. डोकू को बॉल मिला लेफ्ट हैंड साइड में, टेकिंग ऑन 2 men, लेकिन आई बिलीव हेवी बॉल. ऑल्दो बर्नार्डो सिल्वा क्या वर्क रेट, एंड डालो कीप्स इट आउट. गोल किक फॉर यूनाइटेड मैन. क्या बात है आज भाई. मैं आजकल इतना आदत होंगे ना कम ऑन चेल्सी, और आजकल थोड़ा सा भावनाओं में बह रहे हैं हम चेल्सी के कारण बिकॉज ऑफ थिंग्स गोइंग सो बैडली. आई एम लाइक इन वॉच अलोंग व्हेन आई एम डूइंग अ न्यूट्रल वॉच अलोंग व्हिच आई ऑलवेज यूज्ड टू डू विद यू ऑल. थोड़ा सा मतलब टेम्प्ट हो रहा है. यहाँ पर देवेश और ऑल द यूनाइटेड फैंस भी मिले भाई, यूनाइटेड के चैट्स गा दो. नहीं और ये शॉट आ गया पहले, गोल नहीं, डिफ्लेक्शन वाइड ब्रो. फिल फोर्डन, फिल फोर्डन का बहुत इंटरेस्टिंग पिक है. फिल फोर्डन माइट बी इन दोस हाफ स्पेसेस, और ये एक शॉट टेकर भी है. तो इंटरेस्टिंगली जब केविन डे ब्रुयना काइंड ऑफ ड्रॉप्स बैक, फिल फोर्डन इज द गाय, अगर उसको स्पेस मिला ना, ही विल गो फॉर इट. लाफ्टर क्लब यहाँ पूछ रहे हैं which player you sad for the end of the career, Hazard or Neymar? Obviously Hazard यार, I'm a huge Hazard fan. लेकिन Robin, I think I was the saddest if I'm being honest. Again, people know that Robin for me along with Terry and Kaka are the 3 ultimate goats personal level पर. लेकिन Hazard is also very close, absolutely. कॉर्नर से गोल ना कंसीड करे भाई साहब आज, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हाइट ठीक है यार. आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इश्यू रियली. मतलब you have Varane and Evans. On the other hand, also Nathan Ake, Diaz are there. So I don't think I don't see a corner goal. Let's see, I might be wrong. लेकिन
मुझे लगता है सिटी ओपन अप करेगी अगेन. यूनाइटेड बहुत ही लो ब्लॉक नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इफ यू ब्रिंग देम ऑन इट्स अ प्रॉब्लम. यू कैन नॉट प्ले दैट वे अगेंस्ट सिटी. आपको मिड ब्लॉक खेलना पड़ेगा और यू हैव टू रेडी टू काउंटर. और विथ यू हैव टू हैव इट, क्योंकि एक आउटलेट चाहिए, नहीं तो यू विल बी काइंड ऑफ इनवाइटिंग प्रेशर. चलो भाई 3-1 बोल रहे हैं चिन्मय इन द हाउस. अगेन जो भी लोग देख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट लाइक बटन. यहाँ पर डी ब्रुयने ऑलरेडी इन द बॉल टेकिंग अ ट्राई फॉर एन असिस्ट, लेकिन नहीं हुआ. डोकू इन स्पेस, इंटरेस्टिंग लीन कैम पोजीशन विद डी ब्रुयने आल्सो देयर. आप रख रहे हो बॉल लेफ्ट साइड में. कौन है भाई ये? बर्नार्डो सिल्वा. बर्नार्डो सिल्वा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद डी ब्रुयने. व्हाट अ थ्रू बॉल बाय डी ब्रुयने. चलो, अरे जॉन स्टोन्स पेनल्टी दे देगा रेफरी तो. अरे लकीली नहीं दिया है भाई. यूनाइटेड फैंस, व्हाट टुडे इज ऑर्डर व्हाट. अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ है कि नहीं है. द रीजन आई हैव रिएक्टेड दैट वे इज बिकॉज सिटी का, मतलब सिटी फैंस मुझे गाली देंगे, लेकिन द रियलिटी इज अंडर पेप एंड सिटी एंड द वे दे प्ले दे डिजर्व इट एज वेल. लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स 50-50 डिसीजंस इजी गया है सिटी को, इज व्हाट आई क्लेम फॉर पेनल्टीज. यही चीज अगर चेल्सी का होता है, इफ आई स्पीक आई विल बी इन ट्रबल. यूनाइटेड फैंस, आई डोंट नो इफ यू एग्री. ये गोल आने वाला है. हालैंड को हेडर, लेकिन आई थिंक जस्ट अबाउट थोड़ा पीछे था एंड ही लीप्ड, बट नो अवेल. गोल किक है भाई. Casemiro got the ball from Stones. अरे nice one from Casemiro भाई. Nice one. Shape कैसा है भाई? I think to be honest, Stones is very much playing in midfield, and that is something that होता ही है. मार्च का महीना आ गया, गुंडोगन नहीं है इस साल, तो इस बार मिडफील्ड में Rodri, Stones have to do even more. I can see that happening again 3-4-1, and that is what they are playing. That is City. और हाँ, United on the other hand, I can see basically width not being there. तो देवेश आपने जो बोला था 4-man midfield is what it seems. लेकिन अभी तक खाली डिफेंड ही किए. तो I would like to see when they are in attack as well. It's all City, bro. It's all City to begin with. Obviously expected भी है Etihad में, but come on. Yep, Leverkusen definitely winning the Bundesliga. People are saying that भाई अगर लाजियो के साथ हार गया ना कल परसों ये अपना टूकल बंदा बायर्न म्यूनिख तो भाई might be available. फेब्रिशियो ने कंफर्म भी किया है. I don't know man. Chelsea fans, कोई चांस है? Todd Boehly changes his mind? I don't think so. You know, United fan Kakas to goal. अरे भाई राहुल भाई, I'll get emotional bro. क्या याद दिला दिया. United fans look away. In my personal opinion, there are two goals and there are two performances, individual performances in Champions League which absolutely stand out. Like absolutely. मतलब again, in terms of non-English footballers का बोल रहा हूँ. One is Ronaldinho. अरे Doku on the left hand side, लेकिन just over the bar गया है. One is Ronaldinho, and that is Ronaldinho against Chelsea 2004-2005 season Champions League. हारे थे, but Petr Cech and the entire Stamford Bridge had a round of applause for him. Awesome, as in Barcelona lost, but still awesome performance. One of the great performances that I've seen. English team versus a non-English team वाला scenario बोल रहा हूँ उसमें. तो one is Ronaldinho. Second is obviously the one which Rahul has reminded me. Of course, and the way that वो बारिश भी आ रही थी राहुल, मतलब काका was like godly bro that day. और right side में भाई ये क्या हो गया? Garnacho on the right hand side is free. No Aki, भाई Nathan Aki OP यार. He did just about enough, and Ederson catches it easily. Should Garnacho have taken a shot early on? Bhai, through ball over the top on the right hand side. That is what width has to be maintained by United, and Garnacho gives them that. यहाँ पर मेरा क्या पूरा सिस्टम हिल गया. कोई नहीं, we are back. Nice job as Stones. I think tactics यही अभी है, sit back and counter. लेकिन width चाहिए देवेश उसके लिए. Outlet is very important. Yeah, again I was lucky now. Sometimes I feel very very obliged यार, मतलब to kind of just thank यार. But the fact is, I know अभी social media, but social media में ना things get hyped like crazily bro. Well, although newspaper and TV तो उस समय भी था obviously, and social media just about शुरू हो रहा था, but come on यार, मतलब those days, those goals, and the next morning we used to speak with our friends away, मतलब एक अलग रहता था माहौल यार, मतलब it's crazy man. Again, Johnny Evans, nice defensive work against De Bruyne. पहला गोल आ जाए ना, अगेन रिमेंबर, इफ सिटी स्कोर फर्स्ट देन यूनाइटेड आर डूम्ड इन माय ओपिनियन. तो पहला गोल अगर काउंटर में यूनाइटेड करती है तो द थिंग इज यस, यूनाइटेड माइट सिट बैक, बट ऑन द अदर हैंड प्रेशर विल बी टोटली ऑन सिटी, क्योंकि रिमेंबर देयर इज अ टाइटल रेस गोइंग ऑन. लिटरली अगर सिटी जीती तो 1 पॉइंट डिफरेंस होगा येट अगेन.
बट एज ऑफ थिंग्स स्टैंड लिवरपूल हैव वन, और वो कैसा हुआ वो भी कंट्रोवर्सी के साथ में इन ऑलमोस्ट स्टॉपेज टाइम के फुल टाइम के बाद के 1 मिनट में 99th मिनट एंड 98th मिनट गेम, बट इट्स ओके. लिवरपूल आर द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स. यहाँ पर क्रॉस आया, वेल डिफेंडेड बाय एवंस yet again, and Onana takes a catch. Good one. I think it was Lindelof or Onana, sorry, Evans. हाँ, लेकिन कल का गाइज एवरीवन, मतलब इफ आई स्पीक विल आई बी इन ट्रबल? क्या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा अगर मैं बोलूं तो? मतलब नूनेज़ गोल शुड हैव स्टूड यार. एज मच एज हम यहाँ क्रिप कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे. बाय द वे यहाँ पर ब्रिलियंट किक बाय ओनाना. एक सेकंड, व्हाट इज दिस? ब्रूनो फर्नांडिस, Rashford! Oh my God! It's a goal! Rashford goal, guys! What a sensational goal, boy! Sensational goal! Counter में Onana OP हो जाए यार. Onana, Bruno Fernandes and Rashford combine, and what a finish by Rashford, भाई साहब. First goal by United, and this is what changes the scenario totally. Full pressure on City now. Full pressure on City. As much as United won 3 points in a derby, 1 point is not too bad. और सिटी भाई आपको पता है अगेंस्ट चेल्सी में मिस किए थे चांसेस. अब प्रेशर नेक्स्ट लेवल. आप ट्रेबल लियो एंड ऑल दैट, बट फोर्थ ईयर में दिस प्रेशर डीलिंग एट अगेन इज नॉट इजी, एंड दैट इज व्हाट मेंटालिटी मॉन्स्टर्स दिखेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा. इज इट ऑफसाइड? नो. इज इट ऑफसाइड? इज इट ऑफसाइड? इज इट ऑफसाइड? Don't tell me it's offside, bro. That moment, again, मैं United fan हूं नहीं, लेकिन Bruno Fernandes looks like, considering the lines, Chelsea fans especially know जो हुआ था लिवरपूल के अगेंस्ट 2 फाइनल्स में, लेकिन pretty sure यहाँ पर लाइंस ड्रॉ होगी guys. Oh भाई साहब, goal is standing. It is not offside, although lines दिखाई नहीं दिए गए, but ठीक है, कोई नहीं. As a neutral, I like it, and I think we deserve it. Having said that, चेल्सी के लिए भाई अंकित क्यों चीयर कर रहा है? चेल्सी के लिए यू वांट यूनाइटेड टू लूज, बट ठीक है, एज ए न्यूट्रल जस्ट लेट्स जस्ट एंजॉय द मैच, एंड कांग्रेचुलेशंस यूनाइटेड फैंस फॉर नाउ. भाई साहब, एरिक टेन हाग ग्वार्डियोला अभी के लिए. एक बॉल ओनाना भाई. आई थिंक ओनाना डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. ओनाना इतना गाली लेता है. If you all followed Serie A, of course, in the Champions League as well last season, what Onana did for Inter Milan, that is what he used to do. What awesome distribution by Onana. I have to say it. And again, it is the tactic. So credit to Ten Hag. Long ball, and you keep your wit with Bruno Fernandes as well there. Keep your excitement calm. But what a finish by Rashford. Absolutely. If Poch sacked with manager, you want to Chelsea. भाई obviously I want one of, मतलब मैं थोड़ा सा vibes वाला बंदा हूँ यार, laughter club passionate बंदा हूँ, और I want the person to be passionate. Obviously on the sidelines, nothing like a passion that you see with Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Antonio Conte, and you know Chelsea as well. Of course, Carlo Ancelotti is too good to be true. लेकिन हाँ, those three I think मैं mind नहीं करूँगा, लेकिन again seems like it वो realistic नहीं है. न्यूज में आ रहा है दैट नो मैटर व्हाट, पॉच विल बी द मैनेजर बाय द एंड ऑफ द टिल द एंड ऑफ द सीजन, अप और अंटिल हम एफए कप से भी बाहर हो जाते हैं. ओ भाई साहब, पुदिन, लेकिन ओनाना का असिस्ट नहीं आया भाई. प्री असिस्ट है, आई थिंक ब्रूनो का असिस्ट है, लेकिन राशफोर्ड वापस से एक बॉल लेते हुए, बट वॉकर डज वेल दिस टाइम. वेयर वाज वॉकर बाय द वे? वेयर वाज सिटी डिफेंस भाई? सिटी डिफेंस दिखा नहीं. आई हैव टू से इट, सिटी डिफेंस हैव नॉट बीन सो गुड, ऑल्दो लास्ट फ्यू मैचेस में दे डन बेटर. सिमियोने टू बी ऑनेस्ट पता नहीं यार, मतलब बहुत ही मिस्ड बैग रहा है लास्ट 1-1.5 साल में. द थिंग इज, अगर हमारे पास प्लेयर्स ऐसे रहते ना सिमियोने टाइप, तब मैं चाहता. I don't think we have the players like for Jose Mourinho, Simeone and all. We don't have those players. Antonio Conte and Tuchel के लिए फिर भी है, क्योंकि I can see the width. But लेकिन Jose Mourinho और Simeone टाइप मैं प्लेयर्स नहीं देख रहा in terms of basically just the personal now. लेकिन कॉर्नर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और भाई एडरसन palm set just about parries it, लेकिन Bernardo Silva gets the second ball nicely, very well done by Bernardo Silva, must be saying it. Doku on the wing, देखते हैं प्रेशर फुल डालते हुए भाई यूनाइटेड. भाई साहब क्या चिपक रहा है कैसेमीरो यार, चिपक रहा है भाई, like a glue चिपक रहा है. Pep Guardiola is trying to cheer his team. Listen to it, bro.
मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गई माता यार, दे आर डूइंग सम pressing like crazy. Yeah, he did keep his head. Absolutely, he did not panic. You have to say that. Absolutely, Devesh. लेकिन वही है, Onana, Bruno have taken a lot of shit, so credit where it's due. And Rashford as well, to be honest, right? What about Simeone and Chelsea? Again, like I said, अगर squad रहता 2015 का, 2017 का, when we used to have a lot of dogged players like Aspilicuetas of the world, तब मैं चाहता, yes, I don't see those kind of players anymore, and that is what I know. Simeone खेलता भी है football sometimes, but I think in that sense I don't see him. Premier League के लिए भी नया है, plus you know the kind of football doesn't suit. Corner for City, oh near post में I think वापस से corner होगा. Bruno Fernandes gets in just about, और भाई City in my opinion if they don't score a first half goal, trust me भाई something's happening भाई, आज तो हो रहा है. ब्रूनो को गाली CR7 के कंट्रोवर्सी के बाद पड़ रहा है, मे बी, क्योंकि obviously he's become the main man and all that, right? Maybe I don't know. लेकिन ETH has been playing Bruno either बहुत deep या बहुत forward, मतलब he's not playing like you know a proper cam. Bruno KDB winning two men, beating two men, लेकिन यहाँ पर finally falls to Dalot puts in McTominay gets in Rashford nicely played भाई, नहीं he loses the ball, और भाई गुस्सा आ गया यार, गुस्सा आ गया सिटी प्लेयर को भाई, किसको, स्टोन्स को. John Stones is not happy and he kicks the ball like God knows what. Yeah, John Stones ही था तो मारा, पता नहीं. But anyway guys, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button as well. एक सेकंड में यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या? Let's see. But seriously guys, what a goal यार, I have to be saying it. यहाँ पर सिटी का गोल आने वाला लगता है. Come on, Bernardo Silva. Nice save by Onana. Nice save. Foden का shot था, I believe. A goal like this only motivates the entire game. Definitely. मतलब एक या तो एक रॉय कीन टाइप ऑफ टैकल आ जाए, I know those kind of tackles which Michael Essien in his prime used to put. You know, the crazy tackles sometimes are something which the players in the crowd need. But a fantastic goal, a surprise goal is always good. Underdog goal is always good for the neutral crowd. What a save again, catch किया है corner से. Where you should see the Xabi Alonso going by Liverpool, or he stays at Leverkusen FC and some UCL experience and going for Real Madrid. Honestly, I think that Nagelsmann के बाद में जो Tuchel ने किया है, in fact, yes, they were not best signings and he had a lot of injuries. लेकिन Tuchel obviously has not convinced most of the people, right? लेकिन going back to the Nagelsmann way of playing football, it's not too very different. और I think Xabi Alonso वो कर सकता है in Bayern Munich. और वो खेला भी Bayern Munich में, plus the fact that definitely Bayern Munich do that, poach managers and players from other teams. But as a neutral मैं देखना नहीं चाहता वो, लेकिन मुझे दिखता है better fit वहां पर from a footballing sense. And finally comes to Premier League later on when Pep leaves. But यहाँ पर एक second, अरे shot लिया है from the left hand side De Bruyne ने, लेकिन miss kick. But coming back to the point, Alonso, practically I think what I see will happen is he'll go to Liverpool. What he should go footballing wise में, he should go to Bayern Munich. ठीक है, ये मेरा point of view है. But on the other hand, Leverkusen, मतलब वही German football fans would say, if you want German football to get to the next level again, then Leverkusen has to come up जैसे Leipzig and Dortmund have been trying from the last few years. तो वो एक four-pronged title race रह सकता है if he stays in Leverkusen, which will be a big deal, and that's respect to him. But I don't see it happening as much as I would like to see that happen as well. Foden on the right hand side takes a shot, like a nice block by Manchester United. लेकिन हाँ, रियल मैड्रिड का पता नहीं क्यों यार, मुझे लग रहा है इवेंचुअली इट विल बी Nagelsmann or Tuchel or someone like that यार, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है. Might be wrong, but that is what I see. After Ancelotti leaves, जो अभी तो couple of years रहेगा unfortunately for opposition fans. यहाँ पर Doku is a cross, बीच में 2-3 बंदे हैं, लेकिन यूनाइटेड के 4-5 बंदे, तो यूनाइटेड making sure they are clearing it. What do you think of Xabi's system? He plays 3 the back. Exactly, that's one more reason. And यहाँ पर काउंटर हो गया वापस से भाई, ऊपर से वो टॉप, लेकिन बैड टच बाय रैशफोर्ड. ब्रूनो रैशफोर्ड के बीच में भाई अच्छा 1-2 होने का मौका था, लेकिन रैशफोर्ड का हेवी टच ऑन द वॉली था ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पर माइनू विल्स द बॉल अगेन. रैशफोर्ड शुड हैव बीन थ्रू, बट वेरी वेल टैकल. किसका था टैकल यार? डियाज का था, स्टोन्स का था? आई थिंक डियाज का था, प्रीटी श्योर नहीं. लेकिन हाँ, 3 द बैक अगेन लिवरपूल.
Bayern Munich फिर भी खेली under Nagelsmann 3 the back and before as well, लेकिन sometimes under Tuchel as well couple of times. I don't think Liverpool have played, और again player के हिसाब से देखे तो I see Bayern Munich being a better fit. Simple. अरे United are doing very well over the top balls भाई on the left hand side particularly भाई बोलना पड़ेगा. Again Bruno is playing a free role यार literally. और वापस से ब्रूनो ने खेला बॉल, लेकिन यहाँ पर एक कॉर्नर दिया सिटी ने भाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉर्नर, just like Van Dijk dropped his form after one amazing season. I think some him happening with Ruben Diaz is so average. Pudin, heavy comment, bro. नहीं, one amazing season तो नहीं था भाई. Van Dijk is still one of the better centre backs in the modern day. जो लोग बोलते हैं is the GOAT centre back is nowhere close. Sorry, but that's how I genuinely believe it. Again, not a Manchester United fan. I would say I would rate Rio Ferdinand over Virgil van Dijk. If I'm being honest, people were again lucky enough to watch the prime of Rio Ferdinand and the prime of Van Dijk. And I'm a Dutch fan for people who do not know. Lekin he had more than one season, bro. Definitely he's back to near his best. Unfortunately for opposition fans, हम लोग देखे यार Chelsea fans in that match, but I think भाई इस बार गोल होगा सिटी का. एक सेकंड, सिटी का गोल कमिंग डेफिनेटली. नहीं होना ना ओपी, और ऑफसाइड था क्या? फोर्डन वाज ऑफसाइड एनीवे आई थिंक, बट ओनाना भाई, it was a mirror image of what happened with United on the other hand 2 minutes ago. Ruben Diaz average तो नहीं है at the same time, by the way he's quite good. He's not having that season that he had the other year. Absolutely. Jose Mourinho chapter is finished. Laughter Club बोल रहे हैं Serie A win by Inter. Yeah, man, they're doing crazily well. Unfortunately for all Milan fans. Onana. But City भाई अभी गैप ढूंढ रही है धीरे धीरे. Again, मतलब you can argue Manchester United are playing like a 4-3-3 with Fernandes and Garnacho there, but it could become a 4-5-1 for all we know. अगेन जब गर्नाचो लेफ्ट में आ रहा है तब ब्रूनो फर्नांडिस ड्रॉप कर रहा है. मतलब दे आर कीपिंग बिटवीन वन गाय नॉट बोथ. दैट्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मैंने नोटिस किया है. ब्रूनो का थ्रू बॉल, नेथन आकी इज देयर, बट पीपल विल नेवर प्रेज नेथन आकी फॉर व्हाटएवर रीजन. फेवरेट मिलान प्लेयर ऑल टाइम काका यार. काका हैज बीन माय फेवरेट मिलान प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. माल्डिनी इज क्लोज, शेवचेंको इज क्लोज, सेडॉफ इज क्लोज. मतलब अगेन लॉट ऑफ लेजेंड्स रहे यार मिलान में. करंट टीम में तो ऑब्वियसली मतलब आई फील आई लाइक ऑलवेज अ विंगर यार. लाफ्टर क्लब ओजीज ऑफ द चैनल नो, आई एम डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर आई लाइक ड्रिबल्स, आई लाइक विंगर्स. तो आई वुड लाइक राफेल लियोन, क्रिस्टियन पुलिसिक. यस, पीपल रिमेंबर मैं क्रिस्टियन पुलिसिक काइंड ऑफ पीपल को सॉफ्ट कॉर्नर रखता था हमेशा थोड़ा बहुत, लेकिन गाली भी दिया लास्ट में व्हेन ही वाज इन चेल्सी. डालो कैसा लगा आपको दिस सीजन? बाय द वे, he's improved a lot, I must say. Doku winning a corner नहीं, Onana keeps it in. चलो, well done by Dalot and Onana. I think Dalot, the fact is Diogo Dalot has that personality in him. Devesh, that's an important factor. Aaron Van Bissaka का defensive element है और those tackles है absolutely. लेकिन I think एक अलग सा personality है. मतलब you know that Portuguese personality proper Dalot का है वो. I see that clearly. So I think that has helped काफी for you know in difficult situations, in difficult matches. Again, काफी matches में left back भी खिला था, remember, and I thought he did decent if not perfect. United have pacey players and they are good in quick counter. Something we did recently. I think City have to change tactics. Yes, हमने वही किया था on the turn. Remember Nicholas Jackson, Sterling, etc. did that to City. बार्सा यूनिवर्सल इन द हाउस. रोमा ने जब से जोजे को सैक किया है, दे आर विनिंग गेम्स. हाँ बार्सा यूनिवर्सल. बट टू बी फेयर टू जोजे के लास्ट 6 गेम्स वर्सेस रोमा के फर्स्ट 6 गेम्स अंडर डिरोसी देखिए द kind of games. I'm not saying कि Jose ended well or he did very well in the last couple of months he was the manager. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, context is a thing about opposition, about people getting fit etc. वो भी है थोड़ा सा. लेकिन हाँ, credit was due as well. And to be honest, Jose मुझे लगता है he obviously works better जहाँ पर he gets more creativity at the club. People think he's only dogged, वैसे खेलता है. That is part of his approach for sure. लेकिन for me all of Jose's teams आप देखो ना, successful teams हमेशा मतलब एक्स फैक्टर प्लेयर्स रहे. और उसका एक्स फैक्टर प्लेयर डिबाला यूज्ड टू बी इंजर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. नॉट एक्सक्यूज, लेकिन वो ओवर डिपेंडेंसी हो गई थी एट सम पॉइंट पेलेग्रिनो और डिबाला पर. लेकिन फेवरेट यूसीएल सीजन दैट यू नेवर सॉ बिफोर और आफ्टर?
फेवरेट यूसीएल सीजन दैट यू नेवर सॉ बिफोर आफ्टर, मतलब यूसीएल मैं देखते आ रहा हूँ भाई काइंड ऑफ 99 से, टू बी ऑनेस्ट, लाफ्टर क्लब। बट आई डोंट नो, मतलब एक सेकंड, राइट साइड में गोल आएगा, नहीं नहीं, वेल डन भाई। फोर्डन विट दे रहा है भाई सिटी को, और माइनो डिड वेल दिस टाइम, और दे गेट अ कॉर्नर सिटी, दैट इज। तो आई थिंक इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन आफ्टर क्लब, आप क्या पूछ रहे हो, मतलब द फेवरेट यूसीएल सीजन दैट आई नेवर सॉ। How can I have a favorite UCL season that I never saw? Basically, which I saw में से बोलता हूँ, मतलब I think obviously 2011-12 ही बोलूँगा with the bias of Chelsea. और मतलब as much as I hate to say it, but 2004-5 was actually drama के हिसाब से one of the best seasons. 2004-5 में चेल्सी बार्सिलोना मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, चेल्सी लिवरपूल द घोस्ट गोल, देन यू हैड लिवरपूल का स्टोरी, द मिलान लिवरपूल का फाइनल, देन यू हैड लिवरपूल का ग्रुप स्टेजेस गैलाटासराय। चलो एक और गोल आने वाला है डेफिनेटली ऑन द फार पोस्ट, नो वे मैन, व्हाट अ मिस ऑफ द डे ऑलरेडी। Rashford misses it from the left hand side, पहले अपर बॉल आती है ऑन द लेफ्ट हैंड विंग, एज हो रहा है काफी, और यहां पर एक बॉल वापस ब्रूनो फर्नांडिस का, if I'm not wrong, Rashford on the far post, totally misses on the bounce kick. भैया people gonna hate me but I'm always choose Rice over Rodri. आप किसको लोगे इन चेल्सी? इन चेल्सी डेफिनेटली, क्योंकि एंजो फर्नांडिस से राइस वुड हैव सूटेड बेटर 100% ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, अगर रॉड्री होता चेल्सी में, देन आई थिंक यू नो we would have been Rodri and Caicedo. You know what I mean? Exactly. That kind of makes sense. I hope you got my answer. As a player, obviously Rodri better है मेरे भाई। Again, मतलब Rodri is more like the Sergio Busquets to the power of 2 हो सकता है in the future. वैसा kind of player है, वैसे versus Rice is more like Roy Keane to the power of -1 if there's a thing. You know, Doku. Again, Roy Keane was a very good footballer. Left wing से आया cross भाई। Interestingly, Bernardo Silva is giving the width on the left hand side. It's not, मैं सोच रहा था भाई it might be Doku. Doku थोड़ा सा inside forward खेल रहा है. Bernardo Silva is the overlapping guy. ओ भाई VR चेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है? Why United not move from their old players? They'll recruitment एक issue रहा है for sure. Nah. Dalot का handball था, but come on, he had it like this, man. Definitely tucked into the body. No, not a penalty. Okay. City's playing style is so boring. I like games where things are happening like the old Chelsea, LFC, or United. Yes, people might hate me to say it. I feel exactly the same. Again, I didn't like Spain winning 2010 World Cup because firstly they beat a Dutch team in the final. Lekin tiki taka is something which bores me to death, and that's me. Simple as that. Lekin they are one of the best footballing sides, similar to City and Barcelona Prime as well. I must say that as well साथ में। हाँ, I actually like यहाँ पर वो deflected corner मिला भाई, नेथन की was there। लेकिन हाँ, I think अगर if you ask me the ideal playing style जो मुझे अच्छा लगता है, again bias बोल दो, जो भी बोल दो, I think ideal एकदम ideal बोलूँ तो I think 2007 का जो मिलान की टीम थी, nothing can beat that for me. That is like they had everything, defense, attack, wow, counter, playing with the ball, solid mentality, everything. Lekin in my personal opinion, I would still pick the first two back-to-back Premier League wins of Chelsea, 2004-5 and Real Madrid by Real Madrid under Jose. I loved it, bro. As much as Zidane के अंदर और जीते Champions League, लेकिन I think Jose का Real Madrid, the playing style. Again, of course, I'm not saying this is better or that better. Obviously, prime Barcelona, this city as well as Milan is right up there in my opinion in terms of who's the all-time best, along with the Spanish team जो मैंने बोला ही है, along with the Brazilian team, early 2000s and late 90s का. But anyway, मैंने गुड, लेकिन ये कॉर्नर पर मैंने गुड यप एक बोलूंगा, एक तो इजी नहीं था. What kind of player is Peter Crouch? Peter Crouch was definitely great in the box in terms of headers. ठीक है, Peter Crouch was someone जो एक लैंगी प्लेयर था, कहीं ना कहीं जीरू with slower feet. लेकिन in terms of shot, obviously he was a right footer. That's the difference. Yeah, he's almost playing like a अब देखो, Doku and Bernardo Silva kind of interchanging positions at times, लेकिन Nathan Aki is not a prime left back per se ना, he's more like a left center back. So that is why to give the width, दोनों Doku और Silva है उस space में, just in front.
What a banger by Rashford, absolutely Hardik. Yep. I'm gonna name the Chelsea player that signing regretted you. अरे भाई चेल्सी प्लेयर भाई हमने बहुत गंदे गंदे प्लेयर साइन किए हमारी रिक्रूटमेंट ओवर द इयर्स मैन मतलब वी साइंड I don't know. Luis Felipe Scolari के अंडर we signed a Brazilian player. I forgot the name. यार he played like 2 matches for Chelsea. Khalid Boularouz almost एक Dutch player था. I was like, why did we sign Steve Sidwell? Why did we sign under Jose? Even Jose made some bad signings. I remember. Giloboji, he's the guy. 2016 में. But ठीक है मतलब बिग मनी तो नहीं था एटलीस्ट. डोको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द बॉक्स लेकिन Bruno Fernandes doing a lot of defensive work. Yeah, in terms of big money, I didn't want to take the name, but it's obvious. We have quite a few regrets in terms of big money, Putin, to be honest. And Lukaku is right up there, absolutely right up there. नहीं, Zappacosta, strangely मुझे अच्छा लगता था. Mistakes काफी थे, काफी मतलब he was not a defender, he was really a right winger if you ask me, but played as a right back always. I know अभी improve हुआ है last 3 years में, but फिर भी for me, अरे over the top बॉल है KDB का, but Silva wasn't there and Onana catches it. Onana OP हो जाए ना. Chat, come on guys, again जो भी लोग जुड़े, do not forget that like button. लेकिन Zappacosta ना जब गेम में होता ना कुछ भयंकर होता था, या तो वो भयंकर गोल मारता था बेलेटी टाइप्स, और या तो भाई गलती हो जाती थी उससे तो कुछ ड्रामा में देखने को मिलता. तो दैट इज आई डिडंट माइंड हिम जस्ट एज अ न्यूट्रल इफ यू आस्क मी, बट एज अ चेल्सी फैन यू सी दैट. मैं पोर मैन काफू बोलता था मजाक में, लेकिन ऑब्वियसली सरकाज़म में वहां पर. डोकू ट्राइंग टू ड्रिबल पास्ट कैसेमिरो बोला आजा बच्चे मैं तो दिखाता हूँ. यहाँ पर काउंटर आ रहा है वापस से लेफ्ट हैंड साइड से यूनाइटेड का, लेकिन 2 वर्सेस 1 हो रहा है एंड दैट्स वेयर दे हैव लॉस्ट द बॉल. और व्हाट कैन वॉकर डू? McTominay again, he should be more in the game for me, not there yet. Musiala rumors again, it depends on the new manager, to be honest. Ritik अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो I think he'll stay. I don't think he's leaving Bayern anytime soon. I genuinely believe Bayern cannot afford to lose people like Musiala and Kimmich. नहीं होने वाला वो. Doku puts in Silva, but Doku on the 1-2 hits a chakka और यहाँ पर goal kick. Evans, he was good at this time. Why, to be honest, Evans is one of the most underrated defenders in Premier League history, in my opinion. He's right up there. I'm not saying best of the best, लेकिन top 25-30 डिफेंडर्स में से है यार, फॉर श्योर. नॉट टॉप 10-15 में, लेकिन टॉप 20 to 30 डिफेंडर्स में डेफिनेटली जॉनी एवंस हैज टू बी देयर. द फैक्ट इज ही इज डन सो वेल. आप देखो तो यूनाइटेड, I think if I'm not wrong, he was there last season of Ferguson जब जीता था लीग. Then obviously Leicester में he was the main man, and then coming back here again at this stage playing good. I think Evans is very underrated. One of the underrated defenders पे उसका नाम डालूंगा. जैसे Carvalho, he is in the top 5 defenders of all time in my opinion in Premier League. Carvalho is so underrated. Bakaya को big regret, yeah, absolutely. Yes. By the way, some fullbacks ना उनके पास हमेशा है. I don't know, यहाँ पर डच फुटबॉल की बात करें तो Giovanni Van Bronckhorst, he was known for those crazy goals I remember from fullback position, left fullback though. Then मैंने नाम लिया था बेलेटी का, वैसे Zambrotta on either wing was great for Juventus, Barcelona. Zappacosta, Cafu और Roberto Carlos, Maicon. भाई fullbacks जब गोल मारते हैं ना, मतलब फैंटास्टिक गोल. फिलिप लाम भाई, मतलब वन ऑफ, like for me is a goat level player. Sir Alex won his last Premier League with Phil Jones and Evans. Yes भाई साहब. If I'm not wrong, ये मिडफील्ड में कौन था बंदा? Putin, if you can remind me this name, the guy who played for Watford, क्या नाम है यार उसका? Cleverly was there in the squad. Correct me if I'm wrong, guys. Cleverly was there. और ऐसा नहीं कि ऐसी टाइम पास प्लेयर था भाई. Cleverly and all were there, man. Again, Anderson, Nani, the way they used to play under Sir Alex, I know उस समय अच्छे भी थे वो लोग, लेकिन Anderson, Nani, Ji-Sung Park, Cleverly, again, they're not bad players, but they're not like top bracket एकदम. फिर भी the way they played under Sir Alex, and for me, that's why he's a goat in the English region. Higuain regret तो नहीं होगा हार्दिक, he was on loan, it's okay. Everyone says that our recruitment is bad, but they know how to sign young players and they sign raw players. The Chelsea need class player. लाफ्टर क्लब आप 15 या 20 यंगस्टर्स आप खरीदोगे आफ्टर लिटिल बिट ऑफ स्काउटिंग एटलीस्ट. उसमें से भाई अगर 20 में से आपके 4 भी अच्छे नहीं निकल रहे, तब तो क्या ही तो कर रहे. डोकू वापस से छक्का मार दिया आई बिलीव, लेकिन इन द बॉक्स है. हालैंड को रिबाउंड मिला, लेकिन ओवर द बार. इट्स अ गोल किक, हेडर हालैंड का.
Yes, we need some experienced class player, not with all due respect, Sterling, ex City legend. Evans के पास शायद 4 Premier League he was there. Wow. Dutch footballers talk about underrated. I feel a lot of Dutch footballers underrated, yeah. मतलब a lot of them, in fact. मतलब again, I was not lucky enough to watch Marco van Basten live. मार्को वैन बास्टन अगेन शेवचेंको मैं इसलिए फैन बना क्योंकि मार्को वैन बास्टन का हमेशा टीवी में दिखाते थे द वे ही वाज प्लेइंग नो व्हेन आई स्टार्ट वाचिंग फुटबॉल इन द मिड टू लेट 90s तब उसका दिखाते थे मार्को वैन बास्टन देन केम शेवचेंको इट वाज वेरी सिमिलर द काइंड ऑफ टेक्निक दैट शेवचेंको हैड प्लस दोनों मिलान के लिए खेले हैं इवन एक बंदा था हुंटलार ही प्लेड फॉर रियल मैड्रिड शाल्का एंड मिलान हुंटलार was someone again FIFA would know FIFA players Lindelof giving a free kick away meanwhile लेकिन हाँ द थिंग इज राहुल आंसर इज टोटल फुटबॉल अरे सॉरी तो टोटल फुटबॉल सॉरी क्यों बोल रहा अपने आप को मार दिया मैंने लात लेकिन हाँ इन द बॉक्स वन सेकंड लेट्स गेट बैक टू द मैच ओ नाइस क्रॉस और यहाँ पर ओनाना ऑलमोस्ट कंसीडिंग बट नो कॉर्नर हुआ है रिबाउंड से हेडर आया भाई रॉड्री का एंड इट इज अ नाइस हेडर बट अ वेरी नाइस सेव बाय ओनाना ऑन द रिबाउंड केडीबी का ब्रिलियंट फर्स्ट बॉल था which was cleared by Varane very very nicely but it fell back to Rodri जिसका हेडर नहीं एक्चुअली वॉली किक था ब्रिलियंट और ओनाना मेड अ सेव फॉर कॉर्नर विच द प्लेस शॉट कॉर्नर टेकर गेटिंग इट वापस से सिल्वा फ्रॉम द राइट हैंड साइड लेकिन पैर डाल दिया यहाँ पर आई बिलीव माइनू ने नाइसली और राशफोर्ड है क्या पता नहीं क्लेवरली था राइट एग्जैक्टली एंडरसन बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर सर एलेक्स हैज अपग्रेडेड भाई जो ट्विन फुल बैक्स थे भाई यू ऑल रिमेंबर ट्विन फुल बैक्स हु प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैबियो और रफाइल लोग मजाक करते थे कि भाई हाफ टाइम में चेंज कर दिया एक दूसरे को जस्ट टू काइंड ऑफ सेव द लेग्स दैट इज समथिंग दैट यू नो ओनली सर एलेक्स कैन डू यार सिंपल एज दैट and that is the man manager जो आजकल in this generation people tell Ancelotti of course Klopp I have to admit that in terms of man management alone is what I'm talking which Chelsea manager you think was the worst मतलब I would like to say absolutely hated the and atmosphere absolutely hated his appointment and he might be a great manager अरे Haaland shot sorry KDB shot left footer लेकिन just wide from the box on the right hand side लेकिन this guy is achieved European Cups and even with Chelsea won लेकिन मेरे लिए राफा बेनिटेज is right up there I didn't like him at all राफा बेनिटेज ने प्राइम जॉन टेरी का करियर बंद करने की कोशिश की एंड एक्चुअली यू नो व्हाट इवन बिफोर दैट एवीबी एंड्रियास विलास बॉयस जो भी इसका नाम था घंटा एवीबी he tried to change he wanted sexy football that Roman wanted लेकिन सब चीज चेंज करने की कोशिश की from top to bottom जो चीज टॉड बर्लियन को कर रहे हैं in the club that is what he wanted to do him and Rafa Benitez Chelsea fan base would always hate as much as yes he got us to the position almost eliminated us लेकिन got us to the position जहां से डी मटेयो हमें जिताया चैंपियंस लीग तो अगर हम लैम्पार्ड फर्स्ट एंड को बोलते हैं नॉट टू बैड तो why do we say for ABB but ABB pissed off the Chelsea fans because he pissed off John Terry similarly Rafa Benitez and the Chelsea fan absolutely ठीक है तो मैं बोलूंगा them too because they expectations ज्यादा थे लेकिन they really pissed off everyone लेकिन if I'm being honest to neutral मतलब आप भावनाओं के साथ नहीं देखो just in terms of tactics and everything मतलब I have to say it's ग्रैम पॉटर यार आप बोलोगे लैम्पार्ड सेकंड स्टिंट बट मैं यहाँ पर पार्ट टाइम मैनेजर नहीं काउंट करो फुल टाइम मैनेजर्स काउंट करो तो ग्रैम पॉटर हैज टू बी दैट इन माय ओपिनियन ऑनेस्टली यहाँ पर लेफ्ट विंग में डोकू को मिला है क्रॉसिंग नीचे से लेकिन राफेल वरान क्लियरिंग इट भैया मैं तो टिकी टाका पूरा दिन देख सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल अगेन रेस्पेक्ट टू यू मैन अगेन बारसा इज वन ऑफ द गोट टीम्स एंड रहेगी सम ऑफ द गोट मैं खुद बोलता हूँ रोनाल्डिन्हो इज फॉर मी द टॉप 6 फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम एंड आई नो एंड आई पर्सनली मेसी इज अ गोट एब्सोल्युटली वो भी है टॉप 6 में लेकिन फॉर मी रोनाल्डिन्हो आई रेट हिम ओवर मेसी मे बी द फैक्ट इज बिकॉज मैंने उसको पहले देखा मे बी और दोनों साथ में भी खेले ब्रीफली बट आई फील दैट यू नो certain players like Puyol, I used to respect Puyol and love his game. Absolutely. बहुत underrated defender है for people who do not watched him. लेकिन I know Javi Iniesta तो ही खैर लेकिन for me just as a neutral ना I like drama I like थोड़ा बहुत surprises बारसा बहुत dominate करती थी simple as that गोल आने वाला by Foden shot in the box right side से ball आई लेकिन well defended by United but they get back City that is
यस एब्सोल्युटली हार्ड वर्कर्स थे उस यूनाइटेड टीम में. वेलेंसिया, भाई कोबी माइनो डूइंग वेरी वेल यार, बट ही इज गिवन अ फ्री किक और वन अ फ्री किक आई बिलीव. कगावा, यस एब्सोल्युटली कगावा भी बोलना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कगावा का इतना नहीं था इन्फ्लुएंस जितना बेसिकली अदर्स का था जो हमने नाम लिया. चेल्सी साइन बेसिकली वो हेड ऑफ रिक्रूटमेंट था आई बिलीव, एंड ही वुड बी हेडिंग बेसिकली चेल्सी का ग्लोबल रिक्रूटमेंट एडवाइजरी बोर्ड. तो लेट्स सी व्हाट ही कैन ब्रिंग. भाई कल क्या बवाल मचा यार रियल मैड्रिड वेलेंसिया वाले गेम में, बाप रे. मस्ताया, मस्ताया में क्रेजी बचा. एक तो पहले वो पेनल्टी डिसअलाउड कर दिया, ठीक है, स्टॉपेज टाइम में, और फिर स्टॉपेज टाइम से ज्यादा आप टाइम दिए 1.5 मिनट, और फिर दिए तो बीच बॉल में आपने सिटी मार दी. ब्राहिम डियाज का असिस्ट आता और बेलिंगम का गोल आता, और फिर रेड कार्ड मिला ऑब्वियसली फॉर द रिटालिएशन. क्रेजी क्रेजी जैसे परसों हुआ था लाजियो मिलान में, हालैंड गिविंग अवे फ्री किक मीनवाइल, और यूनाइटेड प्लेइंग फ्रॉम द बैक अभी वापस होने वाला है. मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर एंडर हरेरा, यस आई लाइक. वैसा प्लेयर मुझे अच्छा लगता है, मतलब काफी, मतलब ही प्लेज विद हिज क्लब क्रेस्ट ऑन हिज हार्ट, ऑन हिज चेस्ट. बट क्वालिटी के हिसाब से अंडर हरेरा मैं नहीं बोलूंगा ही वाज देयर राइट अप. मैं तो बोलता हूँ मतलब अगेन जैसे रमीरेस था, ही वाज सुपर्ब इन सम गेम्स. I don't think he had that X factor. Andrea Herrera was like more like a 7.5 out of 10 or 7 out of 10 kind of guy. He was like, मैं कैसे बोलूं पुदिन, he was Aspilicueta in midfield. Aspilicueta is superb, awesome. ठीक है, हम चेल्सी फैंस जानते हैं, लेकिन he was not like just in terms of skill, वो एक X factor was not there. That एकदम top level नहीं था in my opinion. हाँ नहीं मिला यार. बाबा सेड इज शेड्यूल इज वेरी टाइट यार. बात हुई थी मेरी, बिग अप टू हिम एब्सोल्युटली, लेकिन शेड्यूल वाज वेरी टाइट यार. ऑब्वियसली ही वाज कवरिंग द मैच, तो मैं यहाँ पर चेल्सी का कवर कर रहा था कोबरा. तो हाँ लिटरली आवर्स का, लेकिन ऑब्वियसली विल मेक अ प्लान यार, विल मेक अ प्लान अगेन. एनीवन हु कम्स टू बैंगलोर लेट मी नो अहेड ऑफ टाइम. और अहेड ऑफ टाइम नहीं बोला था उन्होंने, तो देयर आई एक्चुअली मैसेज करके बोला भाई क्या यार बोलना था. लेकिन आई गॉट टू नो जस्ट ऑन द सेम डे एंड इट वाज टू लेट टू काइंड ऑफ प्लान दैट टाइम. तो ठीक है, कोई नहीं, टेंशन नहीं है. And my early but which team is supporting Euros or which team you want to win? By Dutch team, yeah, Netherlands. I'm a Netherlands fan, yeah, proper. Watch out our FIFA streams, yeah, not FIFA as in just the gaming stream, but also on Almighty Blues, अपने World Cup के streams, yeah. आप जानोगे. Of course, Indian team ही follow, but Indian team obviously World Cups नहीं खेलती है. Always like the Dutch team. लेकिन हाँ चांस तो नहीं लग रहा. चांस तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक फ्रांस, आई वुड लाइक टू से नहीं, मे बी मतलब वन वुड से इट माइट बी सरप्राइज दिस टाइम, इट विल बी क्लोज दिस टाइम, लेट्स सी. क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि यार बहुत ही नेगेटिव था बंदा यार, बहुत ही नेगेटिव था. राफा बेनिटेज वाज ऑलवेज नोन इवन इन लिवरपूल डेज ना, ही वाज ऑलवेज नोन फॉर दोस 1-0 विंस यार पुदिन. सर लोग एसोसिएट जोसे मोरिन्यो, ही वाज लाइक जोसे मोरिन्यो टू पावर ऑफ 10 यार. बहुत ही नेगेटिव था बंदा. His football was like very dogged. वो चीज ठीक है in a team. Again, with all due respect to Liverpool, in the early to mid 2000s, Liverpool used to be like a team which was always fighting to be in the UEFA Cup spots, not even Champions League spot, and that's the reality. Chelsea भी वही हुआ करती थी, right? Early 2000 में, फिर mid 2000 में again in the league मैं बोल रहा हूँ, league में always that 4th 5th 6th position में रहते थे, Liverpool. तो उस वैसे टीम्स के लिए ठीक है, क्योंकि वहां पर you don't dominate football all the time, पोजेशन फुटबॉल. और जब चेल्सी में आया था भाई, इतने सारे अच्छे प्लेयर्स थे, एंड वी हैड साइंड अ फ्यू प्लेयर्स एज वेल. आई डोंट थिंक इट वर्कड, एंड वे दैट वी प्लेड, प्लेयर्स नॉट लाइक इट, फैंस नॉट लाइक इट, ऑल्दो हम डॉगड अप्रोच भी करते हैं लेकिन मिक्स करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ सेंटर बैक यू प्रेफर, समवन विद ग्रेट फुटबॉलिंग स्किल्स लाइक वैन डाइक, और समवन हु हैज ग्रेट रिकवरी पेस लाइक वैन डर वेन? आई थिंक अगेन मतलब पर्सनली स्पीकिंग, आई लाइक अ सेंटर बैक बीइंग अ सेंटर बैक, समवन हु डिफेंड्स. सब लोग मतलब someone who just knows his positioning में अच्छा रहना चाहिए, लेकिन जैसे कार्वालियो है, लेकिन एट द सेम टाइम ओल्ड स्कूल, क्लियर करो बॉल को बिंदास, लेकिन हाँ उसके पास एक डायगोनल पास हो तो बढ़िया है. मतलब आइडियल सेंटर बैक मैं बोलूं राहुल, आइडियल जो ओल्ड स्कूल भी है और उसमें प्लेइंग स्किल्स भी है, इज थियागो सिल्वा इन माय ओपिनियन. ओ भाई यहाँ पर सिटी यार टॉइंग यार ऑलमोस्ट, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे भाई. डी ब्रुयना ऑन द वॉली छक्का मार दिया, छक्का का भी डबल यार, 12 रन है. तो What do you think of Claudio Ranieri's time at Chelsea? Underachieved big time, Hardik. Underachieved big time. हमने signings किए थे, especially in the last season, and that's why he was sacked.
finally, but we should have won the Champions League. The year of Porto, जब जोसे मोरिन्यो ने हिस्ट्री क्रिएट किया था, फर्स्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स आई बिलीव बीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन ऑब्वियसली बीट मोनाको इन द फाइनल्स. वहां पर हमने हारा था मोनाको के अगेंस्ट इन द सेमीज व्हिच ही शुड हैव वन. Although Monaco wasn't too bad at the time, but come on, Chelsea were better क्योंकि हमने जीता था आर्सेनल के अगेंस्ट, an invincible Arsenal we beat in the quarterfinals of that season, and that was a heartbreak and the telling factor. लेकिन we played some nice football and हमने कुछ अच्छे साइनिंग्स किए थे and some great players played under Claudio Ranieri. टिंकरमैन बुलाते थे हम उसको. प्रॉब्लम है दैट द क्वेश्चन वाज दैट मीडिया बोलती थी, एटलीस्ट न्यूज़पेपर टॉक होता था, कमेंटेटर्स यूज्ड टू से दैट दिस गाय डजंट नो हिज 11. वो प्रॉब्लम होती थी. सिटी इज द न्यू चैरिटी एफसी. फरहान बोल रहे हैं भाई साहब क्यों भाई? नहीं अभी तो 0-1 ही है, लेकिन हाफ टाइम होने वाला है, सो मे बी यू हैव अ पॉइंट. अंकित, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग सीरिया एंड एसी मिलान. हाँ, ये मेरा स्टोरी अगेन चेक आउट माय ऑलमाइटी ब्लूज का नो योर क्रिएटर डिटेल में अगर समझना है तो. मैं एक्चुअली पहला गेम ऑफ फुटबॉल देखा था 94 वर्ल्ड कप में, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट रोबर्टो बैजियो वाला फाइनल मोमेंट. एंड देन इटालियन फुटबॉल वाज एट द हाई लेट 90s में. उस समय टीवी में आता था काफी, तो आई यूज्ड टू वॉच. अगेन नॉट गोइंग टू क्लेम कि एवरी मैच देखता था, बट जितना समझ में आता था, आई एम सेइंग लाइक बिटवीन 97 टू 2001. देन 2001 के बाद में मोर प्रीमियर लीग शुरू हुआ मेरे तरफ से. डिफेंड करते रहोगे तो यही लगेगा देवेश. हाँ, अरे भाई, हालैंड ऑलमोस्ट गेट्स इट टू बर्नार्डो सिल्वास क्रॉस, लेकिन रिबाउंड आया. हा, Foden couldn't get it. Volley blocked again. United are definitely defending for their lives. Yep. अगर आपकी टीम टिकी टाका खेलती ना तो आपको बिल्कुल आई अग्री. मतलब फॉर एग्जांपल टिकी टाका नहीं बोलूंगा, कार्लो एंचेलोटी का 2009-10 वेरी अंडररेटेड सीजन अगेन. वी यूज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, प्लेइंग नाइस फ्लोइंग फुटबॉल, बट इट वाज क्लोजर टू the United sexy football way, if you know what I mean. That was what we were playing. So I think I still prefer that. Tiki taka is like, to be honest, there has to be one touch passing, and small triangles and 1-2s and वो सब में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, rather than just tiki taka. मतलब again, I like, for example, the Barca team more than the Spanish national team. आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ. बस गोल आने वाला है भाई. Oh, what is this? Missed of the century, guys. Haaland with the miss of the century. What a play by City, यार. Rodri ने बॉल दिया, Foden on the far post, Foden cross किया, Haaland with the left foot, I believe that too, if I'm not wrong, started by Doku by the way, from the left hand side. Rodri ने cross किया brilliantly, Foden header, offside नहीं था. अरे भाई साहब, miss of the century भाई. Definitely it's easier said than done. It was high, तो पैर बहुत ऊंचा उठाना पड़ा. Then डाइविंग हेडर करना था यार, डाइविंग हेडर करना था. नहीं आ रहे क्वेश्चंस पर आ रहे, और सब लोग लाइक कर दीजिए. यस, सागनिक इन द हाउस. मिस ऑफ द सेंचुरी मैन, आई थिंक इज वेरी गुड, but he is being overrated because if I speak I'm in trouble. It's Man City and around him the better players, but I might be wrong. यार, मैन मैनेजमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्लेयर्स में ही इज राइट अप देयर. मैंने एंचेलोटी बोला, क्लॉप एंड एंचेलोटी इन माय ओपिनियन आर राइट अप देयर, मतलब एकदम राइट अप देयर. क्रॉस आया भाई साहब, एडिसन ऑलमोस्ट बीटन इन द बॉक्स था. कौन? लिंडलॉफ था? कौन था भाई इन द बॉक्स? वो था मैक्टोमिने था. मतलब एवरी प्लेयर तो नहीं बोलूंगा निकित. वन माटा, आई थिंक वन माटा probably losing him into 2014 was again down to Jose Mourinho. Ironically, उसने Jose Mourinho के अंडर काम किया, अंडर खेला in Manchester United as well. But I think Juan Mata का करियर Jose Mourinho ने खत्म किया. As much as I love my GOAT manager Jose Mourinho. Brighton fans are calling De Zerbi fraud after one bad season. I'm not sure fraud वो सब है, to be honest, but वो लोग क्या जाने यार, कुछ लोग, not everyone. Sassuolo में भी यार defensively he was questionable at fault with defense, but in terms of gameplay forward he is one of the better managers in the Premier League. वो मैं deny नहीं कर सकता. और a nice cross by Bernardo Silva. डोकू का सिल्की टच टू बर्नार्डो सिल्वा. इसका क्रॉस आया लो डाउन, लेकिन वेल क्लियर्ड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड. De Bruyne and Ake keeping it and starting the build up again. 3 minutes of stoppage time है guys. डोकू is playing again against City. गौरव बोल रहे
बाप रे, heavy comment bro Foden. By the way, Jackson ने admit किया he should be scoring more goals yesterday. I don't know if you saw the post match interview. बोल देते बोलने पे क्या जा रहा है. JS in the house. I was searching क्यों भाई. Oh, almost on goal यार. De Bruyne on the left hand side कहां से पहुंच गया यार. Varane Real Madrid days याद दिलाते हुए. Again, Doku positionally is not too bad. I must say that honestly. Silva as well. लेकिन Varane भाई पैर डाला just about. Although उसके पीछे था United का defender, if I'm not wrong, Evans. But almost an on goal corner है. De Bruyne taking the corner. Onana not doing badly. मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया मैंने, इसलिए मैं आई ट्राई एंड शेयर इट अगेन. जेस आई वुड रिक्वेस्ट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एज वेल. ऑलवेज आई ट्राई एंड पुट अप अ स्टोरी मोर और लेस. एक सेकेंड, मैंने स्टोरी शेयर नहीं किया क्या? डिफ्लेक्शन भाई साहब, काइल वॉकर शॉट. हाँ, स्टोरी में शेयर किया है ऑलमाइटी ब्लूज के इंस्टाग्राम में, एंड आई बिलीव लाइव गया होगा ऑलरेडी ऑन ट्विटर. नहीं, पेप सीम्स एनिमेटेड. रेफरी को हंसा रहा है. You know what? The ball is round, but that round ball is not good enough for us because today it's not going inside the net because of the fact that we are एकदम hugging in front of goal. लेकिन De Bruyne का corner और nice catch by Onana. Pep's reaction after Haaland missed tells it all. माता आ गई उसमें, पागल हो गया, पगला गया बंदा. कोई नहीं, होता है भाई. Things happen. Pep will be like, अरे भाई, come on, let's get in. और भाई Manchester United fans, how is the Josh man? How is the Josh? I know काफी डिफेंस करना पड़ा, और कहीं ना कहीं you have to thank your stars कि सिटी लिटरली was a सिटी जो थी अगेंस्ट चेल्सी के साथ जो सिटी थी फर्स्ट 65 मिनट्स में, वही सिटी टर्न अप की है. डोमिनेट लेकिन किया है उन्होंने. आई थिंक सिटी हैव डोमिनेटेड, डेफिनेटली दे हैव डोमिनेटेड, यू कैन नॉट से अदरवाइज. बट एरिक टेन हाग को क्रेडिट देना पड़ेगा वेयर इज ड्यू. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? अगर आप अग्री करते हो भाई, सब लोग हिट द लाइक बटन. एब्सोल्युटली. अगेन इट्स जस्ट हाफ टाइम. City do come back. Unlike a Chelsea, second half performances, City are one of the better ones. So expect even more. Remember, Julian Alvarez है bench पर, लेकिन at the same time Pep ज़्यादा change नहीं करता. तो आप लोग बोलिए, what should you change? Having said that, भाई, let's give a round of applause to Onana यार. Onana, Bruno Fernandes taking a lot of hate, और ETH of course. और कहीं ना कहीं you have to say United as a defensive unit काफी blocks की उन्होंने. But Casemiro, brilliant. चिपका हुआ है भाई, चिपका हुआ है. मतलब he is making sure that width of City is not visible. वो थोड़ा सा बर्नार्डो सिल्वा हेल्प किया, बट बर्नार्डो सिल्वा प्लेइंग मच क्लोजर टू डोकू, ऑलमोस्ट लाइक अ लेफ्ट विंगर. बट एंड आई थिंक ही इज द मैन. मेरे लिए बर्नार्डो सिल्वा हैज बीन द स्टैंड आउट, क्योंकि वो वाला पोजीशनिंग वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे. डे ब्रुयने के 2-3 अच्छे पासेस आए थे. बट कमिंग बैक टू यूनाइटेड, यू हैव टू से रैशफोर्ड का फिनिश सुपर्ब, बट इवन बिफोर दैट ओनाना का किक एंड ब्रूनो का होल्ड अप प्ले ब्रिलियंट. अगेन ब्रूनो इज देयर अप टॉप, और ब्रूनो खेल रहा है इन अ फ्री रोल. तो दैट मींस दैट आपका जो विड्थ है, that has been given by pacey players like Garnacho and Rashford, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, and that has worked for Manchester United. Although Rashford 2 chances और मिस किया था, जैसे Chelsea fans would remember yesterday Nicholas Jackson had the same thing. But come on, मतलब credit where is due even to a Mainoo. Scott McTominay दिखा नहीं है मैच में. I don't know. I think that is one thing. There's a little bit of headache. I know थोड़ा लकी भी रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट इट्स 74% पोजीशन ब्रो. मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना ज्यादा मतलब डिफरेंस है. हैविंग सेड दैट, XG आप देखिए, दैट टेल्स मी दैट यू हैव टू थैंक द स्टार्स एंड ओनाना एंड वरान एंड एवंस. एब्सोल्युटली करना पड़ेगा. गुड परफॉर्मेंसेस बाय देम, बट क्या चेंजेस करोगे आप लोग? स्कॉट मैकटोमिने को निकालोगे तो किसको लाओगे? I think at some point the midfielders United will get tired. Maybe Amrabat, क्योंकि physicality I would say, but इतना experience in these kind of games in the Premier League or City, I don't think would make a change unless आप बोलो Doku चल नहीं रहा है, but wing पर कोई नहीं है ना. Alvarez आता भी तो they might put Silva on the wing, that might be possible, लेकिन they would like to keep one-on-one man. पता नहीं, आप लोग बोलिए. Again, जो भी लोग जुड़े, do not forget to hit that like button. 100 likes is what we're targeting. Come on. Thank you, Devesh, for reminding me to stop the timer. Evolution Gaming Lux, but for the first time, there are no cards and continuous gameplay in the match. Yes, कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि यार, what if there is a chance of a red card as a neutral, और थोड़ा लड़ाई झगड़ा just in terms of entertainment अच्छा लगेगा. But
एंटरटेनमेंट हुआ है, नो वन कैन से नो। डोकू पर सब लोग हंस रहे, आई नो ही इज नॉट हैड अ ग्रेट गेम एब्सोल्युटली, और बर्नार्डो सिल्वा को आना पड़ा उसको बचाने के लिए एट टाइम्स, बट द रियलिटी इज दैट डोकू एक अलग चीज लाता है जो सिटी के अदर प्लेयर्स में नहीं है, और मे बी दैट इज वाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लो ब्लॉक हो रहा है, दैट माइट बी वन रीजन दैट यू माइट हैव अ मोमेंट जहां पर यू माइट से दैट नहीं नहीं जस्ट कीप हिम, क्योंकि यू नेवर नो, एक सेकंड के लिए इफ यू आर यू नो स्विचिंग ऑफ आपका ड्रिबल काम चल जाएगा। समटाइम्स यू नो इट्स इंपॉर्टेंट if you are an opposition. Haaland missing sitter, but you have to speak. नीरज खुश तो नहीं होंगे आप, बीइंग अ सिटी फैन? नहीं, नीरज तो मैनचेस्टर फैन है, गाली दोगे नीरज, आई रिमेंबर, मैं कंफ्यूज हो गया, एक और नीरज है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हालैंड यार, डेफिनेटली इन माय ओपिनियन मिस ऑफ द सेंचुरी ऑलमोस्ट है। ऑल्दो जनरल कोई भी प्लेयर होता तो उतना नहीं बोलते हम लोग, मेरे लिए because it is Haaland or because it's tall enough, even though high था ball, he should have got it. नहीं तो भाई नहीं लाता तो again maybe he should have headed it, low header. City looks promising, dominate proper किया, could end in a draw. Doku is playing for उम्मीद क्रॉस करो इंशाल्लाह। हालैंड क्या कर रहा है, हग रहा है अभी तक तो। लुकाकू एंड हालैंड स्वैप करते हैं भैया, इट्स टाइम टू प्लेस अ डील। अरे भाई साहब सबको याद है भाई, हमने ऑलमाइटी ब्लूज में हमने कवर किया था 3 साल पहले, क्या लिंक हुआ था भाई हालैंड, दो स्टोरी दो स्ट्रीम्स आई कैन नॉट फॉरगेट। इट वाज द फर्स्ट समर ऑफ स्ट्रीम्स हमारे लिए, 2021 की बात है, और हम लोग कितना स्ट्रीम करते थे भाई हालैंड के लिए भाई साहब, एंड जस्ट टॉक एंड होप, लेकिन हुआ नहीं। यूनाइटेड डे मैन, एवरीथिंग वर्किंग फॉर देम, एंड अभिषेक इट्स बेसिकली द एंड, खत्म वाला मामला फॉर चेल्सी, जो 0.1% चांस है टू गेट टू द 6th प्लेस, इट्स गॉन अगर यूनाइटेड जीतती है आज, इन माय ओपिनियन। अंकित भैया वो एनीवे गया, लेकिन यू नो 0.1 नहीं है। अंकित भैया, माय मोस्ट अंडररेटेड चेल्सी प्लेयर सेजार एस्पिलिक्वेटा, ही गॉट मोर क्रेडिट देन that they did not receive. I think there are a lot of, I think Thiago Mendes, people don't remember. How many of you know Thiago Mendes, bhai? Thiago Mendes, Spanish football fans would know, French football fans would know. He played, of course, the Portuguese midfielder is what we are talking. Why he had a sensational season first time in Chelsea. Then Michael Essien came and he had to go to Lyon, jahan se Michael Essien aaya tha. And he's one underrated player to the next level, in my opinion. Right up there, I think Gary Cahill, you must say, took a lot of hate by the neutrals. Lekin at the end of the day, you have to give him that, and Aspilicueta right up there. Doku is good on take-ons, but yes, lacks the cross of pace that a winger needs. I think if I am Pep right now, I'm not changing Doku. Shocked, but that's all I'm saying. Because Doku brings you, again I repeat, he brings you something different. हाँ, अगर आपके पास एक प्रॉपर लेफ्ट बैक होता जो ओवरलैप करता और ड्रिबल करता, क्रॉस करता, someone like a Davis, which is too good to be true, then fine, you substitute him. But बेंच पर कौन है? बेंच पर है सर्जियो गोमेज. Pretty sure he's not getting Sergio Gomez at half time. ठीक है, अगर आपको विड चाहिए, आपको टेक ऑन्स चाहिए, then he's your man. हाँ, you can also argue Kovacic is good on take ons. People don't realize he's actually good at dribbles, but he's not a winger. तो क्या कर सकते हैं आप? You can put Kovacic on the pitch, take off Doku, put Kovacic, there's an extra man in midfield, and make Bernardo Silva the winger. That will give Foden को ज्यादा space और इतना ज्यादा overcrowded नहीं रहेगा. That is one more option. आपको crowd करना है basically counters के लिए, Kovacic will be helpful there. I'm just saying that is an option as well. Matthias Nunes / Kovacic could come on and वो leftist side खेल सकते हैं in midfield, but वहाँ Bernardo Silva becomes a proper winger. चेस्ट भी डालता तो गोल हो जाता, क्रॉस बोल रहे हालैंड का चेस्ट का नॉट शो, लेकिन आई थिंक ही शुड हैव डाइव्ड हेडर के लिए। लेजेंड है लेकिन अंडररेटेड फॉर ऑपोजिशन फैंस, प्रोबेबली ही इज यार। आई डोंट थिंक जब हम बात करते हैं ऑल टाइम 11 एटसेट्रा ऑफ चेल्सी, आल्सो पीपल इवन रिमेंबर हिम भाई फॉर व्हाटएवर रीजन। ऑफ कोर्स ब्रानिस्लाव इवानोविच पीपल रिमेंबर, लेकिन फरेरा पीपल डोंट रिमेंबर, ऑल्दो फरेरा में ज्यादा मिस्टेक्स थे। सेकंड हाफ भाई आई डोंट नो इतना कर पाएंगे प्रेशर, अब गोल तो आएगा, आई थिंक गोल आएगा देवेश, आई कैन सी 1-1। मेरा प्रेडिक्शन है 1-1 गाइस, आई माइट बी रॉन्ग फॉर ऑल वी नो। मैंने प्रेडिक्ट किया था 4-2, रिमेंबर, इट माइट बी मतलब आई डोंट नो 3-all 3-2, एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन अभी I know first में different था, लेकिन after seeing the first half, I think 1 goal is coming. और the fact is आपके पास है Varane, Casemiro kind of guys who get tired, but at the same time and people who are not 100% match sharp, तो हो सकता है you get tired. मतलब Evans, Varane, Casemiro are on the pitch, तो हो सकता है defending so much you'll get tired at some point. But again, I will not be surprised अगर आप just about to concede 1 goal. 18 shots by City, absolutely mad यार, absolutely mad. But shots on target खाली 3 यार. Again Onana भाई did well. Rodri का वॉली आया था रिबाउंड से,
बढ़िया save by Onana. I must say it was a late dive though, but he did the job. And again, pre-assist to the goal for Rashford, to Bruno rather, and then Rashford scored. City should come back because they have dominated. I think एक goal तो definitely आ रहा Rohit will be really surprised they don't score again. Alvarez बोल रहा भाई मैं भी हूँ, हम भी है. We were playing for 6 players, no way भैया. अभिषेक बोल रहे जोक मत क्रैक करो भाई. टेक्निकली मैथमेटिकली it's possible bro Abhishek. That's what I meant. इसलिए 0.1% चांस बोला. ग्वार्डियोल अगर लेफ्ट बैक होता तो डोकू नहीं खेलता भैया. आई थिंक ग्वार्डियोल एज अ लेफ्ट बैक ऑल्दो बहुत ओवरलैप करता है, कहीं ना कहीं थियो हर्नांडेस वाइब्स देता है, बट आई डोंट सी हिम लाइक अ विंगर. So rather I would say that even Nathan Ake, people might be surprised. Nathan Ake has won the Premier League with Chelsea playing as a left wing back as a substitute at times. So I think you can have one of them to playing there, but either both of them are not your proper left wing back ideally, or left back who are like overlappers. Na? Okay, why Newcastle United not spending money in winter? Guardiola, by the way, inward आता है ज़्यादा, inward runs मारता है ज़्यादा. Why Newcastle United not spending money in the winter transfer window when they knew they were? FFP was the reason. ना हमने cover किया था after club that they had to sell etc. plus injured players that they couldn't sell, और वो लोग hope कर रहे थे they'll come back, और वहाँ पर things haven't gone well. चलो भाई. I hope so, Rahul बोलना पड़ेगा. Evan centre back and Lindelof versus City's treble winning lineup almost game isn't over yet. David Luiz was also underrated. The first time that he was at Chelsea, of course, the goal that he scored against Manchester United 2-2, bro. Abhishek, you'll be remembering that game like anything, I'm pretty sure. The 2-2 David Luiz scored, bhai. What a month he had, yaar, when he came on. As much as Torres chala nahi tha when he was signed for Chelsea, like, I remember David Luiz and Ramirez क्या impact किया था भाई Benfica. Wow. भाई साहब, प्रीमियर लीग एरा में मैनचेस्टर सिटी हैव नेवर कम बैक फ्रॉम ट्रेलिंग पोजीशन से, आई बिलीव. इज इट ट्रू? आई जस्ट हर्ड द कमेंटेटर से प्रीमियर लीग एरा में मैनचेस्टर सिटी हैव नेवर कम बैक फ्रॉम अ ट्रेलिंग पोजीशन इन द डार्बी, यार, इन द मैनचेस्टर डार्बी. आई डोंट नो. वाओ, आई डिडंट नो दैट स्टैट. इजीली 3-1 सिटी विनिंग बोल रहे जेस, तो आप बोल रहे हो चेंज कर रहे हैं. 2-2 माय प्रेडिक्शन. मैं भी ड्रॉ जा रहा हूँ यार. आई थिंक 1-1 या 2-1 ही रहेगा मेरे ख्याल से. आई फील दैट कहीं ना कहीं सिटी ज्यादा धावा बोलेगी और एक स्पेस क्रिएट होगा, और हो सकता है सेकंड गोल आएगा. आई थिंक प्रॉब्ली, यू नो व्हाट, if I'm allowed to change my prediction, you know what, I agree with Putin's prediction यहाँ पर. Onana master class needed for the second half also. Yes, he had a great first half, I must be saying that. By the way, Onana, the headers in the box by an Evans, by Rafael Varane was right up there in my personal opinion. Again, midfield में Casemiro, brilliant in my opinion. He was awesome. Casemiro भाई at this age he covers so much grass. Wow, awesome. मतलब चिपका हुआ था भाई विंग के, मिडफील्ड के, was like literally a glue. But again, Bruno Fernandes का work rate in that free roll over the top. Rashford good finish, but he should have finished at least one more chance. जो by the way Garnacho का भी half chance था early on में. Viral in the house, क्या हाल है भाई? I love watching such derbies being neutral when my own club. Yes, बिल्कुल Abhishek, and that's one of the reasons why. भाई therapy session है भाई Chelsea fans. If you know, you know. To be honest, मैं सोच ही रहा था I could sit and basically make a review and then do a different cricket stream आज डे टाइम पर. मैं सोचा नहीं, आज ये वाला करते हैं. थोड़ा सा मजा आएगा. As much as I know, मतलब to be honest, Abhishek यही भी बोलता है कहीं ना कहीं, all the top teams on paper are doing well this season except for Chelsea, and it doesn't sound good, but it's what it is. एक second, Bicky in the house as well. Bicky, I don't know if you took your comment. Varane and Casemiro, the Madrid duo, bhai. I have to say, Madrid vibes दिया, especially with that last minute block of Varane, जो almost own goal हो गया था, but corner दिया. Animesh, thanks यार, thanks, big up यार, अपने of course OG member, but big up for the super chat on Almighty Sports as well. Again, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button. We are targeting minimum 100 होने चाहिए भाई beginning of the second half में. कितने likes हुए fam? Let me know. 100 likes is what we're aiming. ना ज़्यादा नहीं मांग रहे. We can definitely go it. And yes, there is a membership scheme also on Almighty Sports. Members, existing members, and hopefully would be members, do not forget to check out membership schemes. यहाँ पर क्रेजी सीजन इज बिगिनिंग. थोड़ा सा ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में हमने ब्रेक नहीं बोलूंगा, लेकिन शॉर्टर वीडियोस तो हम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम्स में हमने ब्रेक लिया था फॉर जस्ट अ कपल वीक्स, व्हिच इज गोइंग टू रीस्टार्ट, व्हिच आई प्रॉमिस, अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट. तो आप लोग देख सकते हो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आफ्टर द टेस्ट मैच, और इवन बिफोर दैट एक्चुअली हिट दैट बेल आइकॉन, क्योंकि अभी आईपीएल सीजन है ही, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है. होपफुली जज्बा वापस आ जाए इंडियन टीम के लिए, नॉट जस्ट
दैट। लेकिन हाँ गाइज मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हुए भाई, व्हाट इज दिस, 35 लाइक्स भी नहीं है सीरियसली गाइज, कम ऑन, वी कैन डू बेटर कांट वी? Definitely we can do better. Everyone who's watching, do not forget to hit that like button on the stream as well as the community post. और अगर आप retweet कर सकते हो जो मैं अभी retweet करने वाला हूँ द लिंक, ग्रेट रहेगा। बट सेकंड हाफ प्रिडिक्शंस हो जाए और चेंजेस अगर करना है तो आप बोलिए क्या चेंजेस करना चाहोगे। If anything, let me know. Again, Doku is not played well. Haaland is not played well, definitely. But at the same time, midfield of Manchester United dominated despite McTominay not being in his A game. So that is something which you have to see if you're a Manchester United fan. Manchester United के पास क्या है bench पर? Not many options on the midfield area. Amrabat के अलावा नहीं. I don't see many options are coming. देखते हैं कौन आता है एक सेकंड में। I'll just put up the thing on screen. अगेन सिटी के पास तो भाई इतने सारे हैं लेकिन वो करता नहीं है चेंज, थोड़ा बहुत टैक्टिकली चेंज कर सकता है क्योंकि काउंटर हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और हाँ थोड़ा बहुत इन द गेम किया भी था बर्नार्डो सिल्वा after the first 10 minutes played closer to Doku, that I could see. Maybe John Stones को बोलो maybe switch to back four क्योंकि काउंटर नहीं करना है, प्रॉपर बैक फोर स्विच करो, give space to your midfield so that you know इतना क्लॉबर्ड नहीं रहे midfield को। Like I said, one option could be Mateo Kovacic or Nunes comes on, Doku goes off, Bernardo Silva goes on the wing. Manchester United के लिए again I could see Eriksen not coming right now. I think ज़्यादा important है for them to defend, and I think that's why Amrabat might come on. I don't know. Again, not at this point though, लेकिन 60 minutes के बाद में Nunes को लाएगा पेप। Alvarez, what do you mean? Or maybe you're just joking anyway. बिल्कुल अभिषेक। अंकित भैया हर कोई ये कहता है कि चेल्सी ने केडीबी को क्यों सेल किया, पर दे नॉट रिमेम्बरिंग दैट टाइम ऑस्कर प्लेइंग इन मिडफील्ड। मैंने आज एक वीडियो शेयर किया, बिग अप टू माय ब्रदर यार, चेक आउट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज के ट्विटर अकाउंट में मैंने शेयर किया, चेक आउट दैट अबाउट ऑस्कर। बट हैविंग सेड दैट, टू बी ऑनेस्ट उस समय भी यार इट वाज नॉट अ केस ऑफ हिम नॉट प्लेइंग वेल और समथिंग, इट वाज अ एटीट्यूड इश्यू अबाउट केडीबी एंड दैट्स व्हाई वो गया था, उसके 36 का आंकड़ा हो गया था भाई। सेकंड हाफ स्टार्टिंग, लेट मी नो, काफी सारे प्लेयर्स थे बट आई वी शुड हैव केप्ट हिम भाई। जॉनी एवंस प्लेइंग वेल, या एब्सोल्युटली। वरान, जॉनी एवंस, ओनाना, कैसेमीरो, आई हैव टू से along with Bruno, these are the standouts abhi tak for United. For City also there have been standouts. I think again Bernardo Silva is awesome. I think he's the best man on the pitch if I'm honest. यहाँ पर एक अर्ली इंजरी लग रही है भाई। सेकंड हाफ प्रेडिक्शंस गाइस सब लोग कमेंट सेक्शन में करिए। अगेन इफ यू हैव नॉट लाइक द बटन, हिट दैट लाइक बटन। But I think when a team have nothing to lose, they go all in, and sometimes this attitude changes the outcomes. Yes, fair enough. जैसे हमने किया था as well in big games. Why teams like LFC perform well in Europe in comparison to a team like Arsenal? Easy answer है भाई। आपका at some point कप फुटबॉल में, जनरली मैं यूरोप नहीं बोलूंगा लेकिन कप फुटबॉल में यू हैव द ऑपोजिशन कमिंग एट यू। तो टीम्स विद पेस, टीम्स लाइक बेसिकली हैवी मेटल फुटबॉल जो खेलते हैं उनके लिए बेसिकली इट्स लाइक यू नो आइडियल सिचुएशन। आदित्य बोल रहे 1-1 होगा। अगेन आई अग्री, इट विल बी अ ड्रॉ, probably 1-1 or 2-1 is what I'm going. Devesh not Devesh won the final whistle अभी, being a United fan भाई। 48-32 में हमने वापस से शुरू करना है टाइम स्टैम्प, कोई 48 मिनट्स में याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज। 48-32 में शुरू करना है राइट, लेकिन 48 मिनट्स में आई नीड अ रिमाइंडर इफ पॉसिबल इन द चैट, कम ऑन चैट ओपी हो जाए। अगर 2016 प्रीमियर लीग इज मिरेकल, अरे भाई साहब आपको अच्छा लगता है बट फॉर मी ऑब्वियसली वन ऑफ द वर्स्ट सीजंस ऑफ चेल्सी ब्रो। एज मच एज आई लाइक द यंगस्टर्स कमिंग ऑन एंड प्लेइंग टुवर्ड्स द एंड, लॉफ्टस चीक, केनेडी, और उन दिनों में बर्ट्रैंड ट्रायो, मुझे याद है ट्रायो आती थी फ्रॉम द बेंच एंड अच्छा लगता था एट गेम्स, लेकिन अलेक्जेंडर पैटो, लेकिन नहीं यार कम ऑन, आई वुड नॉट लाइक टू रिमेंबर दैट सीजन फॉर चेल्सी एटलीस्ट। लेकिन हाँ एज ए न्यूट्रल ऑब्वियसली वन ऑफ दोस सीजंस दैट यू कैन नॉट नेवर फॉरगेट। चलो भाई ड्रॉ आई थिंक इज गुड फॉर यूनाइटेड यार। देवेश कम ऑन, इतनी भी लालच अच्छी नहीं है, लेकिन आई नो ऑब्वियसली यू वांट द विन। अगर विक्ट्री आ जाती तो ऑल ऑफ अ सडन भाई नेक्स्ट वीकेंड में मैच होने वाला है आई थिंक विला और टॉटनम के बीच में, दैट इज 6 पॉइंट प्रॉपर यार। अगेन दे नीड द लेग्स और दे नीड सम मोर क्रिएटिविटी इन मिडफील्ड टू ओपन थिंग्स अप, क्योंकि फॉर मी दैट इज अ लिटिल बिट मतलब यू नीड टू इनवाइट प्लेयर्स। कोई नहीं, देखते क्या होता है। अभी के लिए तो आई बिलीव देर ऑलमोस्ट द सेम, आई डोंट सी एनी चेंज। Nathan Aki playing in that left center back role, Diaz between, or Walker on the right center back role, or
De Bruyne trying to give the width though. अभिषेक याद है वो दिन जहां पर डेको और जो कोल बेंच पर हुआ करते थे चेल्सी के लिए. A prime Deco almost and a prime Joe Cole used to be on the bench for Chelsea. Those were the days, bro. And that is what City reminds us these days. हाँ चलो थैंक्स यार अनिमेश फॉर रिमाइंडिंग मी. 48-30 पे करूंगा ठीक है वापस से. मेरा 48-10 हुआ है अभी जस्ट सो यू नो. अरे वापस काउंटर आ रहा है भाई राइट साइड से. नाइस. McTominay is there. McTominay cross. Nice. Just about defended by City though. Nathan Ake gets the second ball. और they keep the ball City. That is midfield. City का आप काउंटर करेगी. De Bruyne Foden को डालेगा बॉल राइट साइड में. Pretty sure yes he's put it. What does Foden do? चलो मैंने स्टार्ट कर दिया वॉच वापस से. Meanwhile, thank you अनिमेश एंड चैट. लेफ्ट विंग में बर्नार्डो सिल्वा के पास है बॉल. भाई साहब लुक एट द यूनाइटेड शेप गाइस. 1 2 3 4 5. इट्स अ 5-2-3. ये क्या हो रहा है? 5-2-3 खेल रहा है यार. व्हाट इज दिस ब्रो? It's not even a 4-3-3. It's 5-2-3. Haaland, nice hold up play. Bernardo Silva, Doku, deflected goal नहीं भाई. Onana OP यार. Deflection हुआ था. Difficult for Onana. Onana ने touch लिया definitely. और भाई साहब Haaland did well. Haaland did well. I must say it was difficult. कहीं ना कहीं reminds me of in-form Lukaku for Inter Milan. I shouldn't be taking the name, I know. But that is exactly how Lukaku used to do for Inter Milan. जैसे अभी किया हालैंड ने इस मोमेंट में. People will be like seriously तो लुकाकू को याद कर रहा है seriously. लेकिन yeah, he was a player in Inter Milan, man. I would like to say. But he's shit and a pathetic guy right now. Not Haaland. I'm talking about Lukaku. If I speak, I'll be in trouble. 5-3-2. Far post. Oh, nice. Foden is putting some good balls. Like Bernardo Silva is not too tall and over the bar गया for a goal kick. बारसा गेम का भी वॉच अलोंग. मैंने सोचा था भाई मैं एबीएफसी मेंबर्स ग्रुप में वही बात कर रहा था दैट दोनों में से कौन सा गेम करना है. फिर मैं टाइम देखा भाई बहुत लेट है. कल की फिर क्या होता है ना नेक्स्ट दिन वीडियो में प्रॉब्लम होती है बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है भाई. थक जाते हैं बैक टू बैक वॉच अलोंग्स में. बारसा यूनिवर्सल अगेन नॉट 20 एनीमोर बट हम तो अभी भी जवान है. यू नो लेकिन हाँ कल कंटेंट आएगा ना. कल का कंटेंट के लिए तैयारी करनी है वो सब होता है. तो आज एक वॉच अलोंग ही करेंगे. ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे वील वॉच इट. तो हम कवर करेंगे टुमारो इफ देयर इज समथिंग टू बी डिस्कस. लेकिन हाँ ला लीगा आई डोंट नो मैन. कंट्रोवर्सी क्या बोलूंगा भाई. ऑलमोस्ट फिक्स्ड बोलूंगा यार. एज मच एज रियल मैड्रिड वर एट द रिसीविंग एंड दिस टाइम the reality is that जबरदस्ती इंटरेस्टिंग करने का माहौल चल रहा है यार. रेफरी व्हाट डिड ही डू. मतलब आई नो टेक्निकली गलत नहीं किया. ही डिड नथिंग रॉन्ग टेक्निकली बिकॉज इट्स अप टू हिम कि स्टॉपेज टाइम जो होता है उसके ऊपर आप दोगे कि नहीं दोगे. इट्स अप टू हिम. तो ही इज डन दैट अप टू अ सर्टेन पॉइंट. लेकिन द मोमेंट ब्राहिम डियाज किक द बॉल ही फॉर अ क्रॉस ही विसिल्ड and that penalty in stoppage time as well. So something is telling me that I don't know. They're trying to make it interesting. I don't know because La Liga is like this time Barca were not too good. लेकिन you never know. अभी all of a sudden बिल्कुल respect to you man. Again हम लोग भी जगते हैं लेकिन हमारा midweek गेम्स और you know इतने सारे नहीं रहते जितने La Liga फैंस के रहते हैं. So fair enough. Again La Liga फैन हम भी है लेकिन I'm not a Barca fan per se. So I watch it लेकिन वही आराम से लेट के you know रिचाई में घुस के देखता हूँ मतलब उस टाइप का. तो उसमें कंटेंट क्रिएशन आई डू इट फॉर यूसीएल करने वाले बाय द वे इस वीक का. तो वेट फॉर दैट. यप माय फ्रेंड वेंट टू वॉच बेंगलुरु एफसी मैच. यस इवन माय फ्रेंड्स गए. नहीं मैं कहाँ गया यार. कल तो मैच कवर कर रहे थे ना आदित्य आप ऑलमाइटी ब्लूज में नहीं आते हो आजकल. क्या बात है. नाइस टू सी यू ब्रो. ऑलमाइटी ब्लूज में वहां पर हम चेल्सी का मैच वो टाइम क्लैश हो रहा था ना इसलिए वी डिडंट कवर दैट ऑब्वियसली. एंड दिस सीजन टू बी ऑनेस्ट मैं आईएसएल नहीं कर रहा इतना. लेकिन होपफुली वी कम बैक टू इट इफ आप लोग साथ दो. देवेश पार्टी दे रहा भाई सब लोग. देवेश पार्टी कहाँ है बोलो. जीतने दो बोल रहे. चलो कोई नहीं. लेकिन यहाँ पर कोबी माइनो भाई स्टेपिंग इनटू अटैकिंग मिडफील्ड नाइसली. राशफोर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाइस बॉल बाय कोबी माइनो. अरे यार वापस से बिल्डअप हो रहा है. मिडफील्ड को मिला है बॉल फ्रॉम डिफेंस अगेन. स्विच ऑफ प्ले राइट साइड में. गर्नाचो. United having some possession guys. What is this? United having some possession.
Yeah, even I saw it. होता है. I've seen some crazy combinations, bro. To be honest, people were surprised that I used to follow Milan earlier on, क्योंकि हाँ, we had a couple of players obviously from Milan playing. अभी तो बहुत सारे Chelsea players are playing in Milan, but the real reason why I followed Milan is one, because of being exposed to Italian football on TV earlier than the other leagues. Second, because of the Roberto Baggio moment. Third, because of Milan having a lot of Dutch players, if you know at that time. लेकिन यहाँ पर counter by City on the right hand side. Foden getting it from Rodri. Nice distribution by Rodri from left-footed. By क्या pass था. Lindelof beaten, लेकिन Dalot clearing it. McTominay क्या करेगा? McTominay put under pressure, but let's see if Doku can get the ball. No, he doesn't. नहीं, Garnacho should hold up better, but luckily first to Manchester United player. शायद Rashford को मिलेगा. हाँ भाई, मिला है. Nicely. Nice challenge by Walker, bro. I don't think it's a free kick. Although फर्नांडिस फ्री किक दे दिया यहाँ पर सिटी को. सिटी का एटमॉस्फेयर कितना गंदा है. दे आर इन टाइटल रेस एट 2. भाई आदत है, आदत से मजबूर, क्या बोल सकते हैं. अगेन इफ यू नो, इसलिए बोल रहा है कि बहुत सारे लालिगा फैंस है व्यूज के लिए. नहीं बिल्कुल, मतलब द फैक्ट इज वी लव आवर फुटबॉल, ब्रो, एंड टू एंड टॉप फुटबॉल. लेकिन वही होता है ना, स्पेशली जब ऑनेस्टली बारसा यूनिवर्सल, आई डोंट नो इफ यू कैन फील इट. आई रिमेंबर, इतना तो नहीं था खैर, लेकिन बारसा फैंस के लिए जब राइकार्ड का लास्ट फेज था ना, इट वाज अ वेरी लो मोमेंट फॉर बारसा फैंस. आई रिमेंबर दैट. ठीक है, बैक इन द डे. तो इट्स 10 times worse than that what Chelsea fans are facing right now. तो at some point there's a lot of things going on in the mind, and तबीयत भी खराब थी, so I didn't cover recently ना, लेकिन we always want to, and UCL तो cover करती है खैर. अरे भाई, आकी का nice ball. Was Haaland pushed in the box? No, I don't think so. Cleared by Rashford on the left wing. No, only for a throw in though. Umar Akmal in the house. What's up? Umar Akmal, you should have done more with your career, bro. Big up to you. लेकिन what a talent. Manchester United on counter. Rashford on the run. Kyle Walker डेफिनेट फाउल किया है रैशफोर्ड को, लेकिन वेरी सॉफ्ट रेफरी सेज गेट अप रैशफोर्ड. इफ रैशफोर्ड गिरा है, डाइव किया, तो भाई गलती उसकी बिग टाइम. अब देखना पड़ेगा रिप्ले हाउ बैड दैट टच वाज फ्रॉम काइल वॉकर, बट दैट वाज अ डेफिनेट गोल opportunity for Manchester United missed. Oh yes, Umar Akmal, absolutely. Who doesn't know you, man? Who doesn't know you? पोजीशन कितना लूज, यस वो भी है, बट दैट्स हाउ सेकंड हाफ में होने वाला है, बिकॉज पैनिक स्ट्राइक करने वाली. फोडन, व्हाट अ गोल! फिल फोडन पिक्स हिज स्पॉट, टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर. अरे भाई गोलाजो, व्हाट अ गोल बाय फिल फोडन एंड पेप गार्डियोला. दैट इज व्हाई इज अ गोट फॉर दिस काइंड ऑफ मैच. फोडन who scored in the first leg of the season at Old Trafford scores at the Etihad as well. It is 1-1, guys. Rodri gives a simple pass to Foden. Foden beats his man, the left back of Manchester United, Lindelof, but to no avail, क्योंकि भाई Onana was well beaten और कोई भी गोलकीपर यहाँ पर नहीं रोक पाता उस बॉल को. Wow. Foden is like Robin Salahu in that moment. What a goal, यार, बोलना पड़ेगा भाई. Congratulations to City fans. लेकिन is it the right timing for United? Probably not. Is it the right timing? Last 5 मिनट में जो हुआ था with Rashford falling down, Walker का बहुत ही वीक था चैलेंज वॉकर का. बट इन माय ओपिनियन, as much as it was very weak challenge and United fans would say it's a free kick and City fans say that नहीं होना चाहिए था, मेरा न्यूट्रल ओपिनियन दूं, टेना को येलो कार्ड मिला है बिकॉज वो वापस से शुरू हुआ था काउंटर वहीं से. रैशफोर्ड बहुत ही सिली चैलेंज था वॉकर का और बहुत ही सॉफ्ट था, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन I would have given a free kick. I might be wrong. Having said that, Foden totally deserves his goal. इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे? What a goal, bhai. Hasib in the house. What's up? Long time. What's up? Ready for your game later tonight? Screamer for screamer. Yeah, you have to say that. Bhai, game of screamers. Well said, Gaurav. Foden scoring typical Robin type of goal. हाँ भाई, absolutely banger, man. Proper banger था. पक चुका है अब.
भाई ये फ्लेयर आ गया भाई पिच पर, ये क्या सिटी फैंस थ्रोइंग अ फ्लेयर, सिटी फैंस आर देयर ब्रो, सिटी फैंस आर देयर, कौन बोला भाई सिटी फैन में एटमॉस्फेयर, एतिहाद में एटमॉस्फेयर नहीं है, सिटी फैंस आर देयर प्रूविंग इट बाय थ्रोइंग अ फ्लेयर, जो हमें अच्छा नहीं लगता बट ठीक है, हमें क्या है। लेकिन भाई लिंडलॉफ made a mistake, he shouldn't have shown Foden on his right side, he made a mistake, his left side which is his right side, you know what I mean right, Foden's left side is his right side. Trying to crack a PJ but anyway, but Rodri banger coming soon, Manash बोल रहे हैं. You know what? Rodri has done that against Chelsea, although deflected goal था. Champions League final, who can forget? क्या celebration भाई Foden का? Celebration भाई, everyone tell me which is your all-time best celebration? Best celebration for a goal. किसका best celebration है? मतलब in football, जो भी आप लोग ने देखा है. Doku getting substituted, guys. Pep making a change. 59 मिनट में ये क्या हो गया? Alvarez coming in. तो looks like it अब ज्यादा अटैक करने वाले सिटी एंड potentially for all we know it might become a 3-2-3-2, it might become a 3-2-3-2 with Alvarez going up front. Yeah, it might just stay 3-2-4-1 with Alvarez tucking in and Bernardo Silva going wide. देखना पड़ेगा क्या होगा. Casemiro banger coming. No problem, Hasib, no problem. Whenever you're available on both the channels, you're always there. Drogba ka celebration obviously was brilliant. Again, we could pick from any team for that matter. I have a rare celebration name that I have. मुझे अच्छा लगता था. People might not agree, but I loved it. I think I love the Fernando Torres celebration. While at Liverpool, people might not like me saying it, Chelsea fans, but while at Liverpool, the way that he used to celebrate his goals was next level, in my personal opinion. लेकिन even better, मैं बोलता हूँ Falcao and Cavani के celebrations, if you know, मतलब for me those proper FIFA type celebrations है man. Fernando Torres, prime Fernando Torres celebration, Falcao, Cavani. I like those celebrations. Messi, Hasib, obviously. Ronaldo and Messi are obviously the popular ones. Vardy versus Crystal Palace. That's a good one. That's a good one actually. Su has to be the universal one. Lekin again, it's a personal thing. Cavani celebration, bhai, Animesh. Oh, what a coincidence, man. I agree with that. Again, love some Chelsea player celebrations, obviously. लेकिन मैं bias नहीं रखकर एक सेकंड बोला हूँ. Onana भाई just about parrying the ball away for a corner. Cross आया बढ़िया from the left hand side of City. Messi removing shirt in El Clasico winner. 87 for full house. What's up? Ready for your match tonight, Barca का? Oba celebration also great. हाँ, it's very different. Nkunku celebration जो अभी तक हमने को देखने को मिला नहीं है. Chelsea. Di Maria, Nani was brilliant. Victor Moses, guys. Victor Moses, Nani, man. Next level celebrations, man. Again, a certain player का एक और बंदा था. Obafemi Martins. I'm pretty sure अभिषेक अगर आप देख रहे हो आपको पता है. Some OGs might know. Obafemi Martins का celebration. Milito Michu. फार पोस्ट में कॉर्नर, लेकिन वेल हेडेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई बिलीव थ्रो इन के लिए अल्वारेज लेने वाला है. अर्ली थ्रो इन नहीं ले रहा. अर्ली क्या? ग्रीजमैन. रूनी बॉक्सिंग. हाँ, रूनी बॉक्सिंग मैंने शॉर्ट में शायद वही डाला है ना. नहीं, वही डाला है. आई लाइक दैट सेलिब्रेशन एक्चुअली. या वार्डी वाला वाज वन ऑफ दो, लेकिन आई लाइक इट. Adebayor. नहीं यार, वो घटिया सेलिब्रेशन था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही वाज द न्यूट्रल. ही वाज लाइक rubbish, man. Absolutely rubbish, man, what he did. Again, he was a good player. He's a sensational player at times, in fact. Togo के लिए भाई, he was the man who made Togo in the map of football. एक second, यहाँ पर almost City got it, but honestly he spoiled his career, yeah, because of his attitude. Emmanuel Adebayor, he played for some teams, I must say. Man City, Arsenal, if I'm not wrong, Real Madrid, Spurs में भी था क्या? मतलब he played for some teams. Oba Black Panther celebration. Gomez, yes, Gomez crawling वाला ना, बिल्कुल awesome celebration, man. पता नहीं मुझे, the way I liked it, I don't know. Falcao and Torres and Cavani, these are three. अगर मैं नॉन चेल्सी बोलूँ, चेल्सी वाला तो obviously अभिषेक, you know that those are my best celebrations because of the bias. लेकिन हाँ, I must say Milan also is like, again, Pep Guardiola looking worried. ये क्या हो रहा है? Gomez from Swansea, yes. भाई कितने लाइक्स पे भाई सब लोग, हेल्प अस आउट. एंड अगेन लेट्स गेट टू द 5K सब्सक्राइबर्स सूनर देन लेटर, क्योंकि वी आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ कंटेंट. और हिट द बेल आइकॉन ऑन बोथ द चैनल्स. अगेन लिंक्स बिलो, जस्ट द प्रेस ऑफ बटन. एक सेकंड लगेगा, हेल्प्स अ लॉट. मारियो बैलेटरी, व्हाई ऑलवेज मी?
टेवेस का गोल्फ वाला काफी लोग किया। आई रिमेम्बर क्रेग बेलेमी, मैंने उसके लिए भी एक शॉट किया था, इफ यू रिमेम्बर। क्रेग बेलेमी का एक शॉट किया था हुएमाई का लास्ट ईयर, काफी अच्छा स्टोरी है वो भी। शामसी हाँ, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में तो बाबा नॉट शामसी, लेकिन यहाँ पर सिटी अगेन डोमिनेटिंग पोजीशन गाइस। साला हाथ जोड़ के जो करता है हवे में आलती पालती बैठकर, काइंड ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू से। ओ बर्नार्डो सिल्वा ब्रिलियंट बॉल बैक पोस्ट पर, लेकिन आई बिलीव फाइनली जॉनी एवंस क्लियर्स इट जस्ट अबाउट। मैन, आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन मतलब कीप इट। आई नो डिफिकल्ट टू ओपन अप लग रहे हैं वो एट द सेम टाइम, लेकिन एक मिस्टेक आ रही है। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिच पर है, पीपल लाइक लिंडलॉफ ऑन द लेफ्ट बैक, people like Varane and Evans at this stage as center back against this City. Dhava bol rahi non-stop. People like Casemiro in midfield. Onana, is it Natak or is he genuinely injured? Onana down, guys. What's happened? Son celebration. Son also is actually a nice celebration. I think I use it for thumbnails because I like it. Yeah, but again, not going to say that one of the best though. But again, that's very subjective now. Batshuayi and Pedro at Chelsea. If Batshuayi comes back and scores a winning league goal, और अगर next 3 सालों में, for example, if 3 सालों में अगर हम एक लीग टाइटल जीत जाते, next 3 years we won one Premier League title, and if he comes back to Chelsea somehow, होने नहीं वाला, somehow comes back to Chelsea and he just scores that one winning goal in the Premiership, and that's the condition that you win the Premier League only if Batshuayi scores that final winning goal जो किया था against West Brom. Bring it on, man, bring it on. लेकिन Batshuayi, Manchester United fans would remember, he had a crazy Drogba-ish like goal against Manchester United, जहां पर हम eliminate हुए थे Chelsea and Rashford scored a banger free kick. I remember I was flying and was literally airport में, you know, in between flights I had waited and I had scheduled the flight so that in between वो match देख पाऊं, and in between मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ करके देख रहा था वो मैच कैसा. I remember that crazy experience I had and then we lost. But yeah, Batshuayi was the contest for signing at the club. I can 32 million में किया था. Remember that absolutely. It was big news at that point by the way, क्योंकि मार्से के लिए बहुत झंडे गाड़ा था. पेड्रो मैं agree करता हूँ. Pedro kind of guy, someone who's experienced and underrated, और एक shot on goal, we love him, man. Again, technically बहुत अच्छा था. इमरान ताहिर मैराथन, brilliant stuff. चलो भाई, थ्रो इन गिवन, अर्ली थ्रो इन टेकन बाय De Bruyne. Haaland making a channel run, लेकिन कोबी माइनो इज देयर. नाइसली डन बाय कोबी माइनो. ब्रिलियंट टच यहाँ पर रैशफोर्ड से. रैशफोर्ड विल कीप द विड्थ आई थिंक, और 1-2 मिला है उसको वापस कोबी माइनो से लेफ्ट साइड से. वॉकर क्या करेगा भाई इस बार? अगेन रिमेंबर वॉकर का वो टच था ऑन रैशफोर्ड जहाँ के काउंटर से सिटी ने मारा था गोल, बट यहाँ पर नो क्रॉस नहीं लिया यूनाइटेड ने. ऑल्दो गर्नाचो वन द बॉल बैक वेरी नाइसली गाइस, वेरी नाइसली वन द गर्नाचो. मैनचेस्टर यूनाइटेड रखती है बॉल मिडफील्ड में. अगेन आई लाइक द फैक्ट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी विड्थ रख रही है. आप देखो तो इवन इन दिस मोमेंट दे आर मेकिंग श्योर दैट इधर राइट बैक वाइड है या आपका गर्नाचो वाइड है राइट साइड में, और सेम साइड लेफ्ट साइड में हो रहा है, वहां पर रैशफोर्ड इज गिविंग द विड्थ. तो कहीं ना कहीं 3 पीपल हु आर देयर. या ऑनरी वाला आइकॉनिक. अगेन ऑनरीज हैड क्वाइट अ फ्यू सेलिब्रेशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं जब आर्सेनल प्लेयर रहता था आई रियलाइज टू नॉट लाइक, जो मैं बोल रहा हूँ ना, दैट वन टीम डोमिनेट्स. देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन आर्सेनल यूज्ड टू बीट चेल्सी लाइक एनीथिंग, जो वापस से शुरू हो गया है. आई हैव सीन दैट टाइम एंड आई नेवर लाइक दैट पीरियड टू बी ऑनेस्ट, एज मच एज Henry is the goat in Premier League striker. Pedro is still playing under Sarri, yes. लेकिन वो top level I don't think is that player anymore. Batshuayi, he had everything in him in terms of build, in terms of dribble, in terms of shot. I don't know what was his problem. As a footballer, pure footballer, he was good. Problem is that वो ये 5-a-side 6-a-side फुटबॉल के लिए those kind of players work यार. वो आपका वर्क रेट गेम इन गेम आउट वाला प्लेयर नहीं है. और अगेन फिनिशिंग में यू नीड दैट फोकस. Sheldon Cottrell, army salute. Nice one. Thank you. What's up? भाई आपका नाम ये चीलसी
ब्राइटन का आपने डाला है, ओके ओके, गेट इट. Pedro Barca, yeah, Pedro is one guy, who's won literally everything in football, bro. Nice turn by Haaland. Oh, Varane definitely free kick दिया है. येलो कार्ड मिलेगा, रेड कार्ड तो नहीं है, येलो कार्ड है भाई. Varane important challenge, लेकिन it's a very important position for Manchester City. एवंस ने मिस किया हालैंड को, कैसेमिरो एंड एवंस ने, एंड देन वरान स्क्वायर अप हो गया अगेंस्ट हालैंड एंड ब्लॉक्ड हिम. नाइस टर्न बाय हालैंड, आई मस्ट बी सेइंग इट. या मतलब एड्रियान तो रियली डिड. बादशाही का था पोटेंशियल, लेकिन उतना पोटेंशियल नहीं था, लेकिन वो ही डेफिनेटली हैड इन माय ओपिनियन. एक बंदा जो आप लोग सरप्राइज होंगे, लगा आई थिंक कैनेडी जब आया था फर्स्ट सीजन में, मुझे लगा था ही विल बिकम लाइक नेक्स्ट लेवल ब्रो, बट नोवेयर क्लोज. एवंस गोइंग ऑफ गाइस, वैन बसाका कमिंग है, तो लिंडलॉफ आएगा सेंटर हाफ में, डालो जाएगा लेफ्ट बैक में, और वैन बसाका राइट बैक में. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस. वैन बसाका आ रहा है ना? नहीं, अरे कैम्पवेल आ रहा है, सॉरी माय बैड. वैन बिसाका तो इंजर्ड है ना, वही मुझे वैन बिसाका कहां से आ गया भाई. कैम वाला आ रहा है, तो काम वाला आई होप अच्छे से काम करे भाई. अगेन नाइस वे आई एम सेइंग इट, लेकिन काम वाला क्या सेंटर हाफ है ना? सेंटर हाफ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ सेंटर हाफ है. यप. अगेन मैंने बोला था अनिमेश, याद रखिए, द फैक्ट इज यू गाइज हैव पीपल कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, एंड द फैक्ट इज आपके 3 बंदे हैं जो बहुत मतलब दे आर इन दैट एज. वो थियागो सिल्वा कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं. तो सिटी के साथ आपने इतना वर्क रेट दिखाया इन द फर्स्ट 67 मिनट्स, तो आई कैन सी व्हाई कामवाला इज कमिंग. नहीं ठीक है यार, बिग डील. एवोल्यूशन गेमिंग लक्स भाई, सिटी फैंस कौन है चैट में? आई थिंक एवोल्यूशन गेमिंग लक्स इज अ सिटी फैन. ऋतिक अनिमेश इज अ यूनाइटेड फैन. देवेश इज अ यूनाइटेड फैन. एनी सिटी फैंस प्रॉपर? अभिषेक, आई नो यूर अ सिटी फैन. अभिषेक मुझे ढूंढ के पकड़ के मारेंगे. डिब्रोइना फ्री किक. Do you think Mata left because of ETH? नहीं, Mata left because Mata was done, bro. Mata was done. I don't think Mata's career took off for United anytime. He was a squad player at best in United. City, Chelsea में he was a main man. वो मासाकार में, मतलब people will be surprised. Hazard, Mata और Oscar के सीजन में Mata was the main guy यार. That was the reality. Mata was the main guy. Everything used to be through Mata. Hazard used to be the outlet. लेकिन हाँ, इवन फॉर स्पेन आई थिंक वो काफी अंडररेटेड था यार. वो ये डेविड सिल्वा के सेम एरा में था ना. व्हाट अ शॉट बाय काइल वॉकर, बट इजी कैच फॉर ओनाना. कम ऑन गाइस, चैट में बोलिए क्या होगा डिफरेंस मेकर. अब 71 मिनट्स हो रहे मैच में. अब जुलियन अल्वारेज आए थे सिटी के लिए विद डोकू गोइंग ऑफ, लेकिन आई डोंट थिंक जुलियन अल्वारेज हैज हैड द इम्पैक्ट. यूनाइटेड और मुरीनियो को ब्लेम करूंगा भाई, सिंपल एज दैट. नहीं, आई डोंट थिंक सो मैन. कम ऑन, हार्दिक इज टू यंग मैन. हजार्ड तो ही वेंट व्हाट एट ऑलमोस्ट 28 29 आई थिंक. माउंट थोड़ा जल्दी गया ना, तो देयर इज अ डिफरेंस. और हजार्ड स्टार्टेड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, हजार्ड यूज्ड टू बी लाइक अ सेंसेशनल, एक ब्रेक थ्रू किड इवन एट 16-17 ब्रो. मतलब हमेशा आई रिमेंबर लिल 17-18 में वो टॉक्स शुरू हो गए थे. आई थिंक यूज्ड टू प्ले देयर. आई थिंक हजार्ड एंड ककुटा भाई, ऑल चेल्सी ओजीज वुड रिमेंबर. ककुटा यूज्ड टू प्ले एट लॉन्स. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो ककुटा, जो चेल्सी ने लिया था, फिर हमें भी बैन लगा था. जेस बोल्टन माइट गेट वन पेनल्टी. Exactly, very well said, Ritik. I agree 100%. He was used as like a false 10 almost. मतलब एक half space में use किया गया था at times in a 3-man pronged attack, but he's neither a proper winger nor that. मैं बोलता हूँ like play him in a proper cam in a floating role. Bhai, nice block or interception by Bruno Fernandes. Rashford, nice body check to kind of keep the ball. Dalot from left back is in midfield right now as things stand. McTominay puts it back though यार. वापस से डिफेंड में क्यों चला गए? यूनाइटेड एक चांस था यार काउंटर का. टू लेट. मोराटा, क्योंकि मोराटा वाज घटिया इन फ्रंट ऑफ गोल मेरे भाई. As much as there were times when he was sensational, at times he was घटिया. I'm not going to joke.
सीरियसली भाई, मोराटा का फ्रस्ट्रेशन लेवल जो हुआ था ना, द वे ही मिस्ड दोस चांसेस, आई कांट फॉरगेट दैट वन मैच अगेंस्ट आर्सेनल जहां पर 4-5 सिटर्स मिस किया था. Seriously, and he was youngish, not very young, but youngish that time, or he was not as mature as today. Fair enough. Timing is important, as they say, Laughter Club. ये पॉच चालबो को स्टार्ट दे रहा है, लगता है ओनर्स का प्रेशर है स्टार्ट करवाने, सो दैट समर में सेल बिल्कुल पॉसिबल. बट आई डिडंट लाइक, आई नो काफी लोग को अच्छा नहीं लगा. आई डिडंट थिंक चालोबा वाज एज बैड एज दिसासी वाज इन डिफेंस इन द फर्स्ट 60 मिनट्स. मुझे लगा कर्टजुमा चेल्सी अभी तो नहीं, बट अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड टू ब्लेम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट हुआ था उसका इंजरी, उसके बाद ही वाज नेवर दैट सेम प्लेयर. नाइस 1-2 ट्राइड बाय अल्वारेज, सिल्वा लेकिन किया ब्लॉक्ड बाय और रादर इंटरसेप्टेड बाय यूनाइटेड अगेन. मैकटोमिने भाई क्या बोले, कर्टजुमा यू नो व्हाई वी डोंट मिस, पीपल वुड रिमेंबर ऑब्वियसली 2020 एफए कप फाइनल, उसकी गलती से भाई ओबामेयांग ने स्कोर किया था गोल. So sometimes some things I don't forget, but उसकी गलती नहीं है. He also won a Champions League with Chelsea. We all remember his reaction to Matic's goal at Wembley. फिर of course he's had some great performances. 2015 I remember Kurtzuma played in midfield almost in the final of the Carabao Cup. उस समय कार्लिंग कप हुआ था if I'm not wrong. मैकटोमिने भाई क्या बोले, इस बंदे को एक पास नहीं. I think McTominay hasn't performed the level that you want to. Why is Antony coming though? I can understand this. Rashford, yes, he missed chances, but why are you taking over Rashford abhi? हाँ, I understand Haaland is injured, लेकिन Haaland is going to be back ना after the international break. Devesh and Ritik, let me know. Rashford going off, Antony coming on. Do you guys agree with this? I don't. I would like to keep Rashford if I'm Manchester United. I agree that बहुत भागे है. I get that, and that is why I saw that at least one senior guy in Evans was replaced. Come on, yaar. Antony is not that confident guy in terms of just doggedness. पता नहीं, देखते. Yep, Ritik, I agree with this comment though. पता नहीं यार, मुझे तो लगता है that yeah, you might give backing to Antony, but right now you should be thinking about someone who can finish better or he's confident. क्योंकि अभी भी you should go for the victory as much as draw is okay. I'm surprised by Antony coming on. Again, he might score the winner for all you know. एक गोल किया है ना मैनचेस्टर डर्बी में. I remember he scored a very nice goal, Antony, against Manchester United. But yeah, I would have kept Rashford for the goal threat more. I agree with this comment by Animish. लेकिन भाई तब आप क्या करो ना, ब्रूनो को मिडफील्ड में लाओ, रैशफोर्ड को अप टॉप छोड़ो. एक बंदा तो रहना चाहिए ना. अगेन नाइस चैनल रन बाय ब्रूनो. ऑफसाइड है शायद, गर्नाचो ऑफसाइड है भाई. लास्ट के 15 मिनट गाइस, व्हाट आर वी सेइंग. अब भाई सिटी, आई सीरियसली मैन, as much as Pep is a goat, I don't like the fact that Kovacic is going to City yaar. In such a big match, I'm so pissed off yaar as a Chelsea fan. Mateo Kovacic भाई, Enzo literally हर एक सेकंड खेल रहा है. Mateo Kovacic should have played literally more than half the games at Chelsea bro. As much as I know Chelsea was shit and project he did not believe in all that, लेकिन come on यार, Mateo Kovacic को गेम टाइम मिल ही नहीं रहा यार. Come on, आप लुटन के साथ खेलोगे Mateo Kovacic को भाई. 4-time Champions League winner if I'm not wrong. I can't believe it yaar. As much as your City man, this is too much yaar. He has that ability to open things up. Why isn't Mateo Kovacic coming on? Seriously, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात. If I was City, I would have got off Stones. Stones hasn't had his best game apart from that penalty appeal. Why isn't Pep getting Mateo Kovacic, guys? City fans, anyone, please help me understand. एक फाउल लग रहा है बाय काम वाला, but not given for Foden. अरे भाई कितने लोग हैं यूनाइटेड बॉक्स में, एवरीवन डिफेंडिंग ओनली मैन. अमराबाद फॉर मैकटोमिने ज्यादा अच्छा सब रहता शायद. बिल्कुल ऋतिक. सिटी विनिंग बोल रहे जेस. Why are we not going in the same way as Real Madrid? They sign young players playing with experienced players and they replace the old players. बिल्कुल, because हमारी ओनरशिप एंड डायरेक्टर्स के गैंग को पता है घंटा लाफ्टर क्लब, और दे थिंक दैट फीफा मैनेजर इज ओके. और अगेन मैं जैसे Mateo Kovacic मिनी रैंड जो किया अभी, आई थिंक Mateo Kovacic, पीपल लाइक जॉर्जिनियो, इवन एस्पिलिक्वेटा एज अ स्क्वाड, भाई मैं तो बोलता हूँ these guys should have been asked to stay for this year at least और given a proper role at the club, और वो एक ट्रांजिशन होता.
इसलिए ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है ना पीपल लाइक एंजो एंड काइसेडो इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन जो फाइनली अच्छा कर रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम थियागो सिल्वा का कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज है, क्या ही तो बोले भाई। चेस्टेड बोल शोल्डर पुश बोला है मैनचेस्टर यूनाइटेड रेफरी ने, लेकिन आई थिंक इट वाज चेस्टेड अटेम्प्ट। रॉड्री वाज फाउल्ड बट इट्स ओके। ब्रूनो स्टेपिंग इनटू मिडफील्ड, अरे Garnacho रनिंग ऑन द लेफ्ट विंग, विल एडरसन गेट टू इट? आई थिंक एडरसन गॉट अ टच एंड हिट Garnacho, से गोल किक होगा शायद। VR will come in. I think I don't think Ederson fouled Garnacho. I might be wrong. Plus offside भी हो सकता है। Offside नहीं है। I don't think is offside. Was that the ball from Kobe Mainoo or Bruno? Garnacho on the left hand side in the box. Goalie just about got the ball. Yeah, goalie got the ball. Follow up से Garnacho गिरा है, so I don't think वो दिया जाएगा। I don't think that will be a penalty. Kobe Mainoo, yeah, Kobe Mainoo was it, yeah. Thanks, man, Rodri. Brilliant ball, यार। Kobe Mainoo, by the way, अच्छा किया यार। He's playing almost in front of Casemiro and Scott McTominay, यार। He's played well in the second half. I must say it. Second half में जो मतलब थोड़े बहुत इधर उधर के दिख रहा था काउंटर पॉसिबल, Kobe Mainoo has been the central position. चलो भाई, गोल किक है। अगेन वेल डन बाय एडिसन, आई मस्ट से। रिस्क लिया लेकिन वर्थ द रिस्क, क्योंकि नहीं तो गोल होता। क्योंकि Garnacho विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज नॉट आवर निकोलस जैक्सन जो लेफ्ट फुट से स्ट्राइक नहीं कर सकता। इफ यू नो कल जो हुआ था। अगेन मेरे लिए तो Mainoo इज लाइक अ ऑल प्रॉपर ओल्ड स्कूल सेंट्रल मिडफील्डर यार, बॉक्स टू बॉक्स हु कैन प्ले बॉल एज वेल। अगर डू यू थिंक जावी गॉट मोर हेट? मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया यार। अगेन भाई किसी ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया है ना। जावी ने आकर बोला है दैट मैं चेंज नहीं कर रहा माइंड, मैं कर रहा हूँ रिजाइन, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। बट रिमेंबर आई डिड प्रेडिक्ट एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ लोग अगर डिसएग्री किए थे मेरे से कि भाई बारसा हाथ पैर जोड़ लेंगे एंड दे वुड वांट जावी टू कंटिन्यू एंड दैट इज व्हाट दे शुड डू एंड ही माइट चेंज हिज माइंड। ऑलमोस्ट होने वाला था भाई, मतलब कोई तो दे दो भाई क्रेडिट कभी कभी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक जावी रिएक्शनरी फैन बेस है यार, रिएक्शनरी मीडिया है। फोडन ब्रिलियंट गोल, ऑसम मैन, 1-1 United in the mud. Sorry guys, really feels bad because of what they've done in the game, but the reality is that Foden has been awesome, sensational. Bernardo Silva and Phil Foden have been sensational for Man City, and yet again he scores in a Manchester derby. Is बार तो brace Foden scoring, not Haaland like last time, और looks like it is a winner. अभी क्या? अब ETH जा प्रीमियर लीग पर फाइल कर। Brilliant celebration again by Foden, kneeling down and giving this. Having said this, अब क्या है? रैशफोर्ड कहाँ है यार? कहाँ है रैशफोर्ड? कहाँ है हॉयलैंड? हॉयलैंड तो है ही नहीं, एंटनी मार्शियल है ही नहीं, कौन लाओगे आप? जैसे बोला था एब्सोल्युटली सॉरी देवेश, ओनाना अनिमेश बोल रहे उसकी गलती थी या प्रोबेबली, बट आई विल नॉट से दैट, मतलब अगेन इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्राइक। रिमेंबर स्लो मोशन में थिंग्स लुक इजियर। नहीं एक्चुअली यू आर राइट, यस अनिमेश यू आर राइट। अब रिप्ले देखा है मैंने, इट वाजंट एन आइडियल स्ट्राइक, प्लस ओनाना ऑलमोस्ट गॉट अ लेफ्ट फिंगर टिप ऑन इट। You can argue Onana should have done better, but would you blame him? I think it was a brilliant 1-2 in the box by City. You have to give credit where it's due, मेरे भाई, to be honest. मेरे ख्याल से, again, I might be wrong, लेकिन I think यहाँ पर मैं दूंगा brilliant credit. किसके साथ था? Julian Alvarez था ना? My bad, it wasn't Silva, it was Julian Alvarez. So Julian Alvarez technically has had एक impact. So Pep again proven right. Amrabat coming in. Oh, goal needed. आप ला रहे हो फोर्सन और अमराबाद। फोर्सन क्या करता है भाई? स्ट्राइकर है क्या? Garnacho एंड Kobe Mainoo गोइंग ऑफ क्या? व्हाट रबिश, क्या हो रहा है भाई? या ये बंदा कौन है? यंगस्टर कौन है? इज ही अ स्ट्राइकर गाइस? हेल्प मी आउट ऑफ यूनाइटेड। लेकिन फोर्डन मैन ऑफ द मैच इफ थिंग्स स्टैंड दिस वे। जावी टू लिवरपूल, नॉट श्योर यार। वो हेवी मेटल फुटबॉल खेलने की आदत है और लिवरपूल इवन लाइक डॉगट फुटबॉल खेलती है अंडर बेनिटेज। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ ब्रेंडन रॉजर्स के अंदर खेलती थी, लेकिन आई गेट योर पॉइंट। फोर्सन स्ट्राइकर है, चलो राइट विंगर भी। थैंक यू देवेश, लेकिन अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मिनट्स। देखिए यार, आपने इतना क्लेवर चीज किया है,
Rashford was not injured. You have taken him off. I have got on Antony. And thanks Animesh for confirming that as well. But right now I think you have to play as a striker if you're him. Unless आप कौन खेल रहा है striker अभी? Probably Bruno is continuing as striker. चलो थैंक्स ऋतिक. लेकिन अभी भी सिटी कीपिंग पोजीशन गाइस. भाई पेप ग्वार्डियोला अभी तो कर दे भाई चेंजेस. अभी तो कर दे भाई चेंजेस. कोवाचिच को बेंच में अपने चेहरे को देखने के लिए बुलाया नहीं आपने. किसके लिए बुलाया? कर दे भाई, कर दे. स्टोन्स का ऐसे भी एक गेम नहीं निकला है. आई नो आई एम अ कोवाचिच फैन, आई एम सेइंग दैट, बट कम ऑन मैन. टू बी ऑनेस्ट वी कैन नॉट आर्ग्यू दैट सिटी डिड नॉट डिजर्व इट. देखिए एज मच एज यूनाइटेड मिस द चांसेस, मतलब स्पेशली रैशफोर्ड. टेन हाग ने हक दिया, बिल्कुल अग्रीड. देयर वाज नो नीड, इट वाज अल्ट्रा डिफेंसिव. Maybe he was tired, whatever. लेकिन he's just a player who could strike the ball with confidence despite the misses. यहाँ पर क्रॉस आया है लेफ्ट साइड से फोडन का, लेकिन वेल क्लियर्ड बाय यूनाइटेड. फिर सिल्वा गेट्स इट ऑन द राइट हैंड साइड, प्लेज अ 1-2 स्टोन्स के साथ. अगेन व्हाई स्टोन्स कंटिन्यूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई नो वो स्टेप बैक कर सकता है इनटू अ डिफेंस इफ नीड बी, लास्ट के 5 मिनट्स के लिए इफ नीड बी. लेकिन कम ऑन यार, मतलब इफ आई एम कोवाचिच, अभी मैं एज मच एज आप जीतोगे कप्स, ट्रॉफीज एक्सेट्रा, पैसे कमा रहे हो, come on man, if you really want to go to the next level you have to be aiming more man. I'm sorry Kovacic. Matthias Nunes का इतना ही in Kovacic man, really man. Calvin Phillips के साथ जो हुआ है वो हो रहा है भाई. Calvin, no one is going to talk about it. क्यों? क्योंकि Calvin Phillips इंग्लिश था तो मीडिया बोल रही थी. मैं डायरेक्टली मैं अपफ्रंट बोल रहा हूं. as much as I know City fans saying it will not like me saying it, और I know आप जीत रहे हो, आपका अच्छा मोमेंट है, लेकिन as a neutral, as a Chelsea fan especially, and someone who's followed Italian football and league football as well in Spain, Kovacic is one of the most underrated players in the history of football. I'll go so far. I cannot believe it. इन अ मैनचेस्टर डार्बी आप कोवाचिच जो आप लिए थे चेल्सी से, जो आपका मेन प्लेयर था चेल्सी में, आप लेते हो. यस योर सिटी, बट कम ऑन, in this point you're not making a midfield substitution of getting on Kovacic for Stones who's not had a great game. Sorry, I'm saying against the track, like it is what it is. कॉम्बिनेशन यार, लाफ्टर क्लब ऑब्वियसली. एंड कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स दो तो ऑब्वियसली मैं जैसे मैंने बोला, चेल्सी ऑफ 2009-10, दैट वाज समथिंग सुपर. मिलान ऑफ 2007 अगेन. लेकिन वही है ना हार्दिक, चांसेस थे, ऐसे नहीं कि चांसेस नहीं थे. You remember on counter you did have again Garnacho 1-on-1 against Ederson. Ederson did better. Rashford, you had half chances. Again, you have to take those half chances in this game, such kind of game जहां पर आपके पास पोजीशन नहीं है. तेनाक सिर्फ बिगर पिक्चर देख रहा है, वो बिगर पिक्चर हमको नहीं दिखा रहा. Oh my God, sorry United fans. Paddy Pranjal, heartbreak. I know you're a United fan, but hope you're well. Again, City, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप हारे नहीं डार्बी, स्पेशली डबल इन अनदर सीजन, बट वो ये लास्ट 6 गेम्स में हो जाएगा जब आप एक गेम जीते हो सिटी यार. अगेन ओले के अंडर यूज्ड टू डू बेटर, बट अगेन आफ्टर विनिंग दैट फर्स्ट हाफ you would expect a draw, but 4 मिनट बाकी है. रुकिए जरा, have some faith. As much as the youngsters are on the pitch, I know, but to be honest, Bruno Fernandes बहुत ज़्यादा work rate कर लिया. I don't know if he has it in him to kind of give that extra in the last 5 minutes. But what is happening यार, अभी भी सिटी रख रही है पोजीशन. सिटी यार लाइक आराम से हम खेलेंगे, ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन है अपना. तो प्रेस चाहिए भाई, प्रेस चाहिए. यूनाइटेड press, you have to press. There are no two ways about it. हो सकता है they beat the press and they score a counter or city goal, लेकिन you have to, और almost वही किया, open up किया है from the defense to midfield. अच्छा run by Rodri. De Bruyne on the left hand side, brilliant cross, and what a clearance भाई. Varane भाई, really Real Madrid days आज याद दिला रहा. Varane has had a fantastic performance at his age, in my opinion. Superb किया Varane. What a brilliant clearance that. अगेन footnote.com तो बहुत कम रेटिंग दे रही है वरान को, लेकिन आई थिंक he's had a good performance overall. Him and Evans partnership again till Evans was there, but कामवाला आने के बाद I think कहीं ना कहीं गोल्स आए हैं, so you can argue that substitution also is at fault for Ten Hag. उसके बाद विनर आया, right, as things stand.
बिल्कुल बिल्कुल, करते करते होने दो, मैच होने दो, 3 मिनट और स्टॉपेज टाइम बाकी। अगेन गाइस, जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। रिमेंबर इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, नो मैटर व्हाट। जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, लेट अस नो इफ नॉट व्हाई, बट लेट अस एक्चुअली रिमूव दिस images so that, yeah. De Bruyne keeping possession, left wing में Dalot sticking to him. भाई सिटी का, भाई कौन रोकेगा भाई सिटी को? सीरियसली गाइस, मतलब ओनली लिवरपूल एंड द वाइब्स कैन हेल्प, आई गेस। अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन कैन स्टॉप सिटी, आई बिलीव। इवन आर्सेनल आई डोंट फील इस बार होगा। लेट्स सी कल। और व्हाट अ ब्रिलियंट क्लियरेंस बाय वरान यार, ब्रिलियंट हेडर था फार पोस्ट से इनटू द सेंटर, आई थिंक डे ब्रुयना से, लेकिन एंटनी का काउंटर आ रहा है, टेकिंग ऑन एकी, 3-1 है, लेकिन आई प्रीटी श्योर यहाँ पर सिटी ले लेगी बॉल एंड दे हैव। Foden gives away a throw in, I believe, or wins a throw in, either ways. मुदित इन द हाउस। मुदित क्या हाल है भाई? लॉन्ग टाइम नो सी। व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ मेरे भाई? तेरा हाँ, टेनहाग एंड पॉच दोनों का मैं बोल रहा हूँ। मैंने तो अनाउंस भी कर दिया आयुष, टेनहाग एंड पॉच बोथ आर गॉन। आई नो इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। F1 Cobra I used to, man. I used to be a Kimi Raikkonen fan, लेकिन from the last few years I haven't, if I'm being honest. Yeah, but in my engineering days or इन माई टीनेज डेज में काफी फॉलो करता था शूमैकर डेज, जब वो डोमिनेट करता था फुटबॉल, एज मच एज वी हैड दैट एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड, बट जब शूमैकर था ना, उस समय मैं राइकनन फैन था, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट टूकल टू, अरे भाई मुदित, आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद टूकल। मैं तो अभी भी टूकल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ यार। मतलब आई थिंक बायर्न हैवंट डन इनफ फॉर हिम, एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट डन इनफ, एंड आई थिंक सीनियर प्लेयर्स हैवंट डन इनफ फॉर हिम, बट इट्स अ बिट ऑफ ऑल द थ्री। कहाँ जाना चाहिए टुकल अभी? अगेन पीपल आर सेइंग व्हाट एंड ऑल, लेकिन मुझे लगता है दैट ही ब्रेक तो लेकर गया था यार बायर्न म्यूनिख। आई डोंट थिंक ब्रेक वेक की जरूरत है। आर्सेनल गोइंग टू स्टॉप सिटी लग रहा है आफ्टर क्लब। चलो देखते हैं। अगेन दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल, लेकिन डू दे हैव दैट एक्स फैक्टर इन द लास्ट मंथ ऑफ द सीजन वापस? आई डोंट नो, स्पेशली जब वो चैंपियंस लीग में है। सिटी को मैं देखता हूँ अगेन, एज मच एज आई डोंट लाइक अ टीम विनिंग 4 टाइम्स बैक टू बैक, बट दैट्स द रियलिटी। लिवरपूल जाएगा? अरे नो यार, लिवरपूल मैनचेस्टर मत चल जाना है। टुकल अगेन वो फॉलो करता है क्लॉप को, वी ऑल नो दैट, लेकिन आई डोंट थिंक ही प्ले 8 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम गाइस। ओनली लिवरपूल डज नॉट गेट 8 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम। यूनाइटेड आल्सो गेट इट मैन इन दिस मैच। 8 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम। यूनाइटेड फैंस, इज एनीथिंग कमिंग? नहीं, सिटी बोल रही है यार ला दो 8 मिनट, ला दो कितने भी मिनट ला दो, हम पोजीशन रखने वाले, हमारे लिए तो ट्रेनिंग है। Again, John Stones has been kept on the pitch just because of this retention and ball possession. I know that ball playing ability, लेकिन I still am very sad for Kovacic despite a victory of. What a fantastic effort by De Bruyne. Half space just in behind the forward line, लेकिन just wide. Varane close down नहीं किया इस बार, थोड़ा लेट हो गया। Foden to United begging on needs to be popular. नहीं यार, come on. 3-1 होगा, मुझे तो बोल रहे। अरे यार मिल गया हालैंड को। चलो भाई, इट्स अ मिरर इमेज फॉर सिटी। ब्रेस बाय फिल फोर्डन, मिस्टेक बाय यूनाइटेड एंड हालैंड गेटिंग अ गिफ्ट। और यहां पर 3-1 हो गया। बुदित का स्कोर लाइन हैज कम राइट। वनाबज इन द हाउस। क्रेजी मैन, क्रेजी। मिसिंग कांटे स्माइल। अमराबात इज शिट। टू बी ऑनेस्ट, टेनहाग को ब्लेम करूंगा। I don't think he has given enough game time to Amrabat to get that confidence, in my personal opinion. Again, he's not great, but I'm just saying. Bye, City fans are happy. And how are Liverpool fans and Arsenal fans feeling, man? आज तो यूनाइटेड फैंस से ज्यादा लिवरपूल फैंस और आर्सेनल फैंस गम में जुड़ गए होंगे, बिकॉज मार्च के महीने में पता ही है कैसे करती सिटी आफ्टर गेटिंग अ विन। एंड जैसे फर्स्ट लेग में हुआ था, हालैंड ने ब्रेस मारा था, इफ यू ऑल रिमेंबर, एंड फोर्डन स्कोर्ड 1 गोल। इस बार फोर्डन ने ब्रेस मारा एंड हालैंड स्कोर्ड 1 गोल, एंड यूनाइटेड स्कोर 1 गोल एज वेल, ऑफ कोर्स अर्ली ऑन विद दैट मोमेंट फ्रॉम रैशफोर्ड। भाई सिटी मैन, कौन रोकेगा भाई? सीरियसली मैन, इट्स नॉट गुड फॉर इंग्लिश फुटबॉल एज मच एज कांग्रेचुलेशंस टू सिटी, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन पेप ग्वार्डियोला इज हैप्पी एज एनीथिंग एंड ही डिजर्व्स टू बी।
He deserves to be happy because came back from behind in a Manchester derby. First time in Premier League history जब मैनचेस्टर सिटी ने किया है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ प्रीमियर लीग derby, guys. First time coming back after half time. It has not happened. Trailing at half time, Manchester City has come back to get the victory in a Premier League game, which is a Manchester derby. That is the stat, I believe. Amrabat bench warm करने के लिए बैठा है. Giroud back to Chelsea, not a chance, although we miss him. City is always very dangerous in the second half of the season and in second half of games. And that is what Erik Ten Hag has to take the blame. मैंने क्या बोला था प्रीवियस शो में on Almighty Blues? We spoke about it clearly. जो गलती चेल्सी ने किया था at the Etihad, do not repeat the same mistake. He has done the same thing. He has gone ultra defensive in the second half. आप एक्स्ट्रा कॉल कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, आ जाओ हमारे घर भी पधारो, वो बोल रहे हो भाई आप नहीं. That's wrong. As much as you have to give credit to that Phil Foden strike, absolutely वो तो unexpected था. उस मोमेंट में भी Phil Foden was given space by Lindelof, you can say, showing him the right side, which is the left side. The picture is only yeah बिल्कुल आफ्टर क्लब. भाई एक और गोल कर देंगे क्या ये लोग? भाई रेस्ट कर दो, आपका यूसीएल गेम है. मे बी यू नो व्हाट, पेप बोलेगा यूसीएल गेम में तू खेल ले भाई, कोपेनहेगन के साथ कोवाचिच खेल ले भाई. भाई मैं बोल रहा हूं यहां पर न्यूट्रल हूं, इसलिए थोड़ा सा बोलना बनता है यार. As someone who basically left Chelsea as a main man for City, जहां पर ट्रॉफी ज्यादा मिल रहा है आजकल और पैसा भी मिलेगा, but the reality is that this guy is literally on the bench or Kovacic. I can't believe it. तू लूटन और कोपेनहेगन के साथ खेलने के लिए गया था क्या सिटी? Seriously, man, it's almost disrespecting. I hope Kovacic believes in it. Kovacic will never go Modric's level, bro. As much as he's not the player that is Modric, he's a very different player. लेकिन मतलब even for that matter, मैं बोल रहा हूँ, come on यार, मतलब Kovacic should be going to that next level यार as a player, in my opinion. And I don't think he's going at City right now. अगर Alvarez छोड़ता है, then maybe next season. But anyway, City is at what we used to be in mid 2000s and late 2000s. You can't score one goal and then try to defend the entire game. बिल्कुल agreed, 100% agreed, 100% agreed with this comment. Absolutely, यही एक चीज हमने गलती किया था. And क्योंकि हमने फेस किया है, I can directly tell you, City when you are giving them chances, they are one team जो finish करेंगे, एक चांस दो चांस finish करेंगे out of 10-15. They will. एक और आने वाला है. Evolution Gaming Lex is waiting for that. Trophies matter or playing ये क्या ट्रॉफी नहीं यार. Kovacic has won enough trophies. If you were telling me यहाँ पे एक सेकंड, is it a derby moment यार? What happened? Foden, was he kicked? एक सेकंड, Foden है ना नीचे गिरा हुआ? कौन नीचे गिरा हुआ है? Who's this guy fallen down? I missed it यार. Antony fouling Foden anyway सब्स्टिट्यूट होगा अभी गेस्ट अपीयरेंस के लिए लोगों के लिए. भाई अच्छे से सी बना रहा है यार, अभी यंगस्टर को ला रहा है. Kovacic तू पता नहीं अचार डालने गया यार सिटी. सीरियसली मैन, as much as you're winning. तो भाई कमिंग बैक टू दिस कमेंट, आई डिसएग्री. Mateo Kovacic has won 4 Champions Leagues. ठीक है, आई नो प्रीमियर लीग नहीं जीता है, probably that's the only thing that is gone for maybe, but come on, Kovacic has literally won a lot of things with Real Madrid and Chelsea, man. पता नहीं यार, लेकिन Foden went off, Oscar Bob comes on. Alvarez and Oscar Bob वापस से खाली 2 सब्स्टिट्यूशंस यूज किया भाई. Pep Guardiola, he'll play all the B team now in the game against Copenhagen. What Amrabat is to United is what Kovacic is to City. Exactly, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, it's almost disrespect to Kovacic का career and his ability, man, in my personal opinion, as much as it's City. बोर्ड डाबी सिटी डोमिनेटेड. हाँ, और लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिला रिजवान. थोड़ा सा आई वाज होपिंग फॉर अ कैसेमिरो चैलेंज एंड ऑल दैट, लेकिन ठीक है, आई डोंट वांट टू सी एनीवन इंजर्ड. Ankit, whose player legacy is bigger, Modric or Iniesta? Wow, this is a very interesting question. In terms of player legacy alone, I would like to say, wow, very difficult यार, actually different players altogether. लेकिन legacy अगर हम legacy की बात करें, still say Iniesta यार, I don't know. Difficult है, बहुत difficult है.
पता नहीं एक्चुअली नो व्हाट Modric क्योंकि of the longevity at the level that he's played, yeah, probably legacy, yeah, he's probably overtaken. Yeah, जैसे कल मुझे पूछा था पुदिन ने, I remember in chat that Cruz और Fabregas में definitely मैं बोला था Cruz has overtaken as a legacy, so I think yeah I would go with Modric. Maybe recency bias होगा, I don't know, very difficult. Again legacy की बात हो रही, not the players because very different players है, but both fantastic world class goats, man. Or right up there. I think next season KDB will probably leave City and maybe Kova will get some deserved game time. I don't know, man. देखो वही ना, Kovacic and next season after not playing this season will he be the same player? That's one more thing. ना आप assume कर रहे हो. But you have a point, KDB, but will he leave City? I doubt it. Although काफी try कर रही है Saudi, I think City might just keep him for one more season. I feel. I think Iniesta, he won World Cup. लेकिन वही है ना, देखो आप you have a point. What Modric did for Croatia, arguably, I'm not saying it is, arguably it is as big as Iniesta kind of doing for Spain. क्योंकि क्रोएशिया का आप जानते हो population and everything and the way they have kind of come up. चलो full time है guys, the match is over. तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय. अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, very unfortunate, but City deserved it. Let's be real. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. Champions League going away. Champions League probably going away. I think it's between Tottenham and Villa, the last spot. If you know, you know. But देखते हैं. Who do you want to win the league among us? Among three, actually, I wanted Villa, but वो होने नहीं वाला. Honestly, a difficult question again है, लेकिन मैं यहाँ पर I'll stick on my neck and say that I'm okay with City winning it. As much as I don't like any team winning 4, and City have already overtaken us. That's the only reason. Or City kahin na kahin are the best team in England, as much as Liverpool and Arsenal might have something to say. But coming back to the match, guys, pretty sure Foden man of the match. No two ways about it. कोई doubt भी नहीं होने का. Foden obviously got that brace, fantastic half spaces. He was superb. Gave the width, put the crosses at the far post. Volley, brilliant save bhi nikala from Onana, I believe. Bernardo Silva was very close to getting the man of the match, in my opinion. Rodri getting 2 assists in the end helps, absolutely. But you have to say Manchester United kahin na kahin, gave the match away in the second half. Firstly, by missing couple of chances. एक Garnacho का half chance था, Ederson did well उस moment में, और एक Rashford का early second half में. But first half में भी Rashford का एक chance था. Apart from the Rashford brilliant strike on goal, जहाँ पर Onana और Bruno Fernandes को बहुत मिलना चाहिए प्रशंसा. But again, मैंने बोला था, Kobe Mainoo had a brilliant second half up until he was there. Strange substitutions, very strange substitutions. Kobe Mainoo अच्छा खेल रहा था. Garnacho missed a chance, but I think you should have probably kept him. And Rashford as well. कहीं ना कहीं मैं देखता था कि यार मे बी अगर मिडफील्डर होता they would have got a midfielder extra apart from Amrabat, लेकिन था नहीं. So maybe एक injuries एक reason थी. And of course Kamwala coming in, they conceded a couple of goals after that. Remember that. But Julian Alvarez coming on and doing, and yet again, as much as City ने जीता है और easily dominate किया है game, pretty sure you will say that if you're a Chelsea fan, you're like seriously DMing Kovacic and asking him, भाई तो क्या किस लिए गया है भाई, ट्रॉफीज तो है तेरे पास काफी सारे. फुरकान इन द हाउस, नो प्रॉब्लम मैन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एब्सोल्युटली. इनिएस्टा हैज अ बेटर, ओके चलो ठीक है, मतलब अगेन इट्स अबाउट व्यू पॉइंट ना, द वे दैट यू सी. अब दोनों ही गोट्स है मैन, लाइक आई सेड. वही है, मतलब arguably Spain should have won more World Cups. If you know what I'm saying. KDB will not leave us. Yeah, I think he'll stay on for one more season, I feel. लेकिन एक सीजन ज्यादा, I think it's not good to let him on a free. That's also there. Spain was star-studded, Croatia was not. Exactly. That's मेरा वही point था ना, that मेरे लिए मतलब अकेले ने किया है. As much as Iniesta was important and he gave me those pain as a Dutch fan, as the Chelsea fan, 2009-10 respective years में. लेकिन I would still say दोनों बहुत close, but again Ballon d'Or पे तो नहीं बोलूंगा, वो तो भाई जबरदस्ती का एक popularity contest है. Prediction came true भाई. मुदित और मेसी इज गोट कॉम्बिनेशन भाई. इफ you know भाई, अपने ओजीज इन द चैनल, मेसी इज गोट एंड 1 hour बस की प्रेडिक्शन सही हुई. दोनों की प्रेडिक्शन सही हुई. बोरिंग हो जाता है एक ही टीम बार बार, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आई वुड रादर देम सिटी, दैट इज दिस टाइम, दैन लिवरपूल विनिंग द सेकंड टाइटल. क्योंकि एक एज मच एज फन बैटर करते हैं, वो 30 साल में एक प्रीमियर लीग जो लैम्पार्ड ने बोला था ना, वो चीज I would like to keep for Liverpool, लेकिन मुझे लग रहा है लिवरपूल जीतेगी if anyone has a chance. But again, City
almost impossible to beat, you can say, after March. अब वही है, Arsenal, can they do more than what they did last season? I don't know. For a change, I want either Liverpool or Arsenal to win the league. Arsenal तो मैं नहीं चाहता यार, honestly. Obviously, as a Chelsea fan, I wouldn't want them. Of course, ETH को पूछो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रिलेशनशिप है उसका एंटनी के साथ. अंकित भाई, why kind of Busquets player not coming is not speedy? Bhai, Rodri is upgraded version of Busquets. Not exactly the same. Lekin Rodri can arguably do more than him. But certain things, I know Busquets is Busquets. And the legends will stay no matter what. With it in the house, big up, man. Big up to you as well. Always up for it. Bhai, sab log, again, I'm saying it. Almighty Sports and Almighty Blues दोनों में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है. We are working on some things. In fact, मैं शेयर भी करना चाहूंगा just for few of you because you guys are OGs, most of you. I'm investing. So basically, let's see if it's worth the investment अपने pocket से, and hopefully we go to the next level. Hopefully with you guys backing us. Again, जहाँ भी आप देखते हो, be in social media, try and like our posts. अगेन लिटिल एड्स आते तो देखा करिए. आई नो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, लेकिन आप ओजीज हो इसलिए मांग सकते हो. बिंदास ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स. एवरी लिटिल कंट्रीब्यूशन हेल्प्स, बी इट एज अ सब्सक्राइबर, बी इट एट अ व्यूअर, बी इट एट अ मेंबर, बी इट एट अ मॉड, राइट? बट राइट नाउ, like, share, subscribe is what the deal is. But it's going to be a crazy last 3 months of the Premier League season, or lots of it to come also in the T20 World Cup, and then of course before that IPL as well on this channel, not just on Almighty Blues. Haaland भाई, Haaland ने मिस किया था, by the way. We cannot forget the miss of the century almost. लेकिन he should have headed that ball, to be honest. Iniesta could have played for another 2. Yeah, this I agree. Even Messi, man, Messi is good. आपका नाम ही Messi, in my opinion, should have played. मतलब I know बारसा वाला जो सागा था, probably he should have gone. Come on, man, वो MLS क्यों गया, man? Again, I don't mind रोनाल्डो मेसी का डोमिनेशन हो गया, बस. आप जानते हो, मुझे तो जानते हो, मैं बोलता हूँ nothing against them, they are the goods. लेकिन एज अ न्यूट्रल अगर मैं सच में बोलूँ तो they probably are good enough to play in the highest level. Combined 11 of United and City, any United player is in. मैंने शॉट डाली थी combined 6 का, और उसमें मैंने कमेंट बोला था that I think in combined करंट का आप देखो तो it will probably only Bruno Fernandes who might get in, और वो भी शायद नहीं. That is what I said. I don't know if you guys agree. बिल्कुल भाई. फुरकान, बारसा यूनिवर्सल, मेसी इज गोट. ऑफेंड हो गया मैं, मुझे पता था. अगेन व्हेन आई से अपग्रेडेड, आई मीन इन सर्टेन एस्पेक्ट्स. ऑब्वियसली बुस्केट्स इज अ लेजेंड एंड द गोट ऑफ प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस. अगेन देखो, पीपल लाइक बुस्केट्स, क्लाउड मैकेलेली, यू नो, इन सर्टेन रोल, वेरी डिफरेंट प्लेयर्स, लेकिन वो चीज आप नहीं चेंज कर सकते हो. लेकिन क्या मैं बोल रहा हूँ, अपग्रेड इज लाइक दिस गाय गेट्स यू a little more than that, अपार्ट, मतलब जो मॉडर्न डे फुटबॉल को चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ, सिंपल एज है. लेकिन हाँ, जॉन स्टोन्स कंप्लीटिंग द गेम आज, आई वाज सरप्राइज्ड, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. इट हेल्प दैट वो पोजीशन रखता है, बट आई वाज सरप्राइज्ड. दैट्स द ओनली क्रिटिसिज्म, इफ एट ऑल. ये सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया, एंड आई नो कोपेनहेगन के साथ लोग खेलेंगे, जो कोवाचिच इज एंड द न्यूनेस ऑफ द वर्ल्ड, आप खेलेंगे, और ग्वार्डियोल भी. लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू सिटी. एक बार लीग टाइटल देख लेते हैं क्या लग रहा है. आज बाय द वे बारसा की भी मैचेस, ऑल द बेस्ट टू ऑल द बारसा फैंस इन द हाउस. याद रखिए, कल बवाल मचा था, बहुत सारा ड्रामा हुआ था. सो हो सकता है ला लीगा गेट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग आफ्टर दैट, बिकॉज जिरोना हैज ड्रॉप पॉइंट्स, रियल मैड्रिड हैज ड्रॉप पॉइंट्स रिसेंटली. तो फॉर ऑल वी नो दैट माइट हैपन. बट आप लोग बोलिए भाई, हु इज विनिंग द टाइटल? आई वुड लाइक टू से माय हेड सेज लिवरपूल. हार्ट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नॉट अ सिटी फैन, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक you know, I have a feeling about City again coming and doing, and kahin na kahin this City side, you know, if I'm being very honest to God, na, matlab, this City side is a side which deserves to win that 4 back-to-back Premier Leagues. As much as I hate domination, I don't hate City, absolutely, congratulations, and they deserve it. Lekin one side which deserves to win those 4 back-to-back titles is probably City. I don't know, and I think Pep Guardiola को चल जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए. उसका दैट हो गया भाई, हो गया. एज मच एज वी आर नोवेयर क्लोज, हमें तो भाई बात कर रहे हैं चेल्सी फैंस, लेकिन विल बी बैक एब्सोल्युटली नो मैटर व्हाट, आप जानते ही हो. लेकिन सब लोग जो भी यहाँ पर है, हु हैव नॉट हिट दैट लाइक बटन, प्लीज हिट दैट लाइक बटन. प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन, हाँ, मेरा प्रेडिक्शन अभी कर दिया मैंने. माय हेड सेज लिवरपूल, बट आई हैव अ फीलिंग अबाउट सिटी. आई डोंट थिंक आर्सेनल इज गोइंग टू विन. आई माइट बी रॉन्ग. My question is why we signed Modric. I feel very sad for him. The reason why we signed for him is because Arsenal wanted him, और हमें basically माता आ गई. और थोड़ा बहुत स्काउटिंग किया था, और उसने दिखाया था while at Shakhtar that he was good, and people like De Zerbi say that he can become a Ballon d'Or level player. ऐसे नहीं बोला भाई, De Zerbi knows some ball. He's यार डिफेंसिवली बुरा है, लेकिन अटैकिंग वाइज इज अ गुड कोच. लेट्स बी रियल. वो चेल्सी ब्राइटन का जो राइवलरी चलता है, वो एक अलग चीज है. बट हाँ,
आई थिंक मुड्रिक का टाइमिंग एंड प्राइस इज अ थिंग, सिंपल एज दैट. टाइमिंग कि भाई आपने जब साइन किया उस समय बेसिकली उस सीजन में आपका मैनेजर सैक हो गया, विच इज पॉटर. Remember? So that is one reason. And then Lampard did not play him. So his confidence went from bad to worse. And then obviously Poch came pre-season में, so he did well and then again dropped after scoring. तो काफी ये होता है, ऑफलाइन भी काफी सारे मोमेंट्स थे. Oh yes, yes. By the way, मैंने बोला surprised by how so much time भाई Stones रहा. Even McTominay staying on the pitch for so long, I'm surprised. I don't think पैसे है क्या मतलब बारसा के पास, मतलब अगर आप बेचोगे someone like Christensen then fine, but I don't think you should sell Christensen in my opinion. Again, it depends on the money. Of course, it's worth signing. Of course, City is winning, Arsenal and Liverpool games are remaining, and I think we can do it. Yeah, I think वही है, those are the key games. Yep, fair enough प्रथम. लेकिन big up यार, 2 hours 20 minutes हो गया है, and with everyone अभी के लिए इतना ही है. Big up to you all the best again to Barca fans. लेकिन कल हम शायद वीडियो डालेंगे. We'll put a shot on both the channels. Hit that bell icon. Like button तो दबाना ही है यहाँ पर, लेकिन अगर आपने दबाया नहीं अभी तक, but even that bell icon so that you know when the video comes. And the cricket content is coming here apart from the football on Almighty Blues always, no matter what. Big up to everyone here and congratulations to City. Another Premier League coming. Let's see. Wait करेगा.